First of all, we are sorry that due to technical problem, we couldn't begin our program at right time or at scheduled time. A very happy good morning to one and all. Myself, Dr. Hamdani Rizwana. I am delighted to welcome in our webinar, Understanding the Research Process from Idea to Publication. Whether you are a student, a researcher, or an academic professional looking to enhance your research journey, this session will equip you to navigate research process from idea to publication. We have distinguished speakers who will share their valuable knowledge. For their introduction, first of all, I would like to invite Professor Zareen Naz to introduce esteemed Dr. Mukhtar Khan, sir. Welcome to everyone. It's my pleasure to welcome you all to today's webinar. I, Assistant Professor Zareen Naz, I have the honor of introducing today's distinguished guest. This is warm and professional way to transition into the introduction of the guest. As we are privileged to introduce Dr. Muhammad Mukhtar Khan, a highly esteemed educator with 16 years of experience in teaching and deep expertise in Sharia finance. Dr. Khan served as assistant professor and head of the Department of Commerce at Rizvi College of Arts, Science and Commerce, where he has played a pivotal role in shaping the academic success of his students. Dr. Muhammad Mukhtar Khan is distinguished academic with a strong foundation in commerce and finance. He holds an MPhil in commerce from Madurai Kamraj University. Additionally, Dr. Khan successfully cleared the SET examination in 2017. With his expertise in commerce and finance, particularly in Sharia compliant finance, Dr. Khan has built a strong academic career and has significantly contributed to both teaching and research. His deep knowledge and experience continue to shape the future of his students as he plays a key role in advancing education in his field. Dr. Khan has actively contributed to seminars on global financial system and organized key academic events including UGC-sponsored National Conference on Statistics. He initiated a certificate course in investment with the BSE Brokers Forum and has been a CAP examiner for TY Become and MHRM paper since 2012. As MCOM coordinator, he has led the sessions on research visibility, literature review, and corporate grooming. His participation in seminar covers topics like HR policies, CSR, and initiative teaching methods. His active involvement includes attending programs on credit and grading systems, revised syllabus and exam patterns, and research tools like SPSS. His scholars his scholarly contribution extend to publications on subjects like Sensex calculations methodology and financial soundness of the Indian economic through the BSE and the future of the derivatives market. Notably, his recent work on the ethical investment and finance in India was presented at Podar College in February 2023. Dr. Khan's commitment to advancing knowledge in finance and education and ethics has made a lasting impact on both his students and broader academic community. In summary, this highlights the key contribution achievements of Dr. Mukhtar Khan, reflecting his commitment to education, research, and advancement of knowledge in commerce and finance. With that, I now turn it over to Dr. Muhammad Mukhtar Khan to continue and share his valuable insight with us. Thank you so much. Thank you, Zareen ma'am. We have an eminent speaker among us. I mean Dr. Salma Abdul Sattar ma'am. For her introduction, I request Professor Akhtar Shah. Good morning, everyone. It is Professor Akhtar Shah, Arts Science Commerce College, Malegaon City. It is time to introduction of our another guest, the resource person.
Although she doesn't need any kind of introduction, because her powerful impact in the field of education is something like thunderstorm, powerful and impressive. Yes, I mean Dr. Salma Sattar, ma'am, the in charge principal and associate professor in political science at JT Art Science Commerce College, Malegaon. She has been dedicated herself in the field of education more than 26 years. She is UGC NET qualified and PhD from Savitribai Phule, Pune University. She is a distinguished research PhD guide at Savitribai Phule Pune University and JGT University of Rajasthan. Let me tell you her expertise, her extensive mastery in the field of research, where she has published 26 research papers, 16 chapters in books, 180 conferences where she has contributed. Moreover, she has played a crucial role in leadership, women empowerment, and shaping the society. Her impactful contribution in the field of higher education and community development distinguished her and made her an eminent personality in the field of education and transfer her an ordinary woman to extraordinary woman. Welcome, ma'am. We welcome you behalf of Art Science Commerce College, Malegaon City. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you Dr. very Sir. much. We have invited a prominent speaker, Dr. Amjad Shaikh, for his introduction. I call Dr. Rubina ma'am. Good morning, one and all. I am Dr. Rubina Sattar, HOD of English Department. I am here to present the introduction of Dr. Amjad Shaikh. Dr. Amjad Shaikh is a distinguished academician and researcher currently serving as assistant professor and head of the Department of Mathematics at AKI's Pune College of Art, Science and Commerce in Pune. With an impressive academic background, Dr. Shaikh holds a PhD in mathematics from Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, and has secured an All India rank of 24 in the CSIR NET examination. Boasting 18 years of Boasting 18 years of teaching experience, Dr. Shaikh has taught at prestigious institutions including Bahrain University in Bahrain. His research expertise lies in fractional differential equations, computational methods for partial differential equations, approximation theory, and special functions. He has authored an impressive 28 research papers in renowned peer-reviewed journals such as Elsevier and Springer, garnering 875 citations. Dr. Sheikh's academic prose extends to his role as a guest editor for a special issue on mathematical aspects of COVID-19 in the Computers, Materials, and Continua Journals, USA. He is also a reviewer for several international journals and has written 19 textbooks on various mathematical subjects. A life member of esteemed academic bodies like the Indian Mathematical Society, Indian Science Congress, and Marathwada Mathematical Society, Dr. Shaikh is dedicated to advancing mathematical research and education. As a member of the Internal Quality Assurance Cells at Pune College, he is committed to ensuring academic excellence and quality assurance. On behalf of MGB's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, I welcome to Dr. Amjad Shaikh to share his valuable knowledge with us. And we are so honored to have you, sir. Thank you. Thank you very much. Yes, thank you, madam. Thank you, Rubina ma'am. Respected speakers, dignitaries, faculties, and students. It gives me immense pleasure to welcome you all in this special event on behalf of Mahatma Gandhi Vidya Mandir, our institution, on behalf of all our faculties, and on behalf of all our institution. Our institution is a pioneer in research due to great leadership of our Joint Secretary, Honorable Dr. Prashant Dada Hire. We received
continuous guidance and motivation from our mentors like Honorable Dr. Apurva Hire, Dr. Advaya Bahire, Dr. Sampada Hire, Dr. Smita Tai Hire, Dr. Harish Arke, and Dr. V.S. More. A special warm welcome is extended to renowned speakers who accepted our invitation. We appreciate your willingness to share your knowledge and expertise, and I'm confident that everyone will gain from your presentation. We present our sincere welcome to all dignitaries and faculties of various colleges in attendance. Your presence will enhance the value of the webinar. We appreciate your willingness and enthusiasm to participate in the webinar. We would like to welcome all students who have made an effort to attend this webinar. Thank you and again welcome. Now, I request our IPSC coordinator, Dr. Shaikh Ahmed, to present aims and objectives of the webinar. Over to Shaikh, sir. Thank you, ma'am. Good morning, one and all. It's my pleasure to present before you the aims and objectives of the webinar. Research is the backbone of any innovative activity. The importance of the research is to develop critical thinking and problem solving skills, enhance research skills and academic writing, fosters analytical and evaluative thinking, encourage independent and learning autonomy, prepare students for thesis, dissertation, writing, which is compulsory for UG and PG students. The specific aim of this webinar is to understand the research process, to develop the research idea, to understand choosing research methodology based on research topic, to motivate students and teachers for more research initiatives, ethics of research and publication, challenges in research and publication. With this, I conclude. Thanks for giving me the opportunity. Thank you. Thank you, sir. Let's move forward towards our research journey. Now, I request Dr. Salma Abdul Sattar, ma'am, to start her presentation. Salma, ma'am. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. It's honor for me to be part of such wonderful elite gathering. Today, I welcome all the audiences who joined this national level webinar, which is organized by MGV's Art Science Commerce College, Academic Research Committee and Department of Economics in collaboration with JT Art Science Commerce College for Women IQAC. Dear ma'am, first of all, I am highly obliged to you and your team members, and I pay tribute to the visionaries of MGB's late Karmavir Bhau Sahib Hire, who is the founder of your Mahatma Gandhi Vidya Mandir. I would like to congratulate the patrons of your institute, President Honorable Pushpatai Hire, Honorable Dr. Prashant Dada Hire, the General Secretary of MGV, Honorable Dr. Sumita Tai Prashant Hire, the Treasurer of MGBs. Along with, I would like to congratulate your mentors, Honorable Dr. Apurva Prashant Hire, the Coordinator of MGBs, Honorable Advay Abha Prashant Dada Hire, the Trustee of MGB, Honorable Sampada Tai Hire, Honorable Dr. Harish Arke sir,
Honorable Professor Dr. V.S. Moresa. Along with that, I congratulate the organizing team of this national webinar, Dr. Arif Anjum sir, Dr. Hamdari Rizwana ma'am, Dr. Imran sir, Dr. Rizwan Khan sir, Ansari, Dr. Mobin sir, Dr. Shakib sir, Dr. Asim ma'am, Professor Amir sir, Dr. Rubina ma'am, Dr. Zareen ma'am, Professor Shah Akhtar. Along with, I would like to motivate our IQSC team of JT Art Science Commerce College, Professor Munawwar Ahmad, IQSC Coordinator, Professor Swintra Mishramkar ma'am, Dr. Adil, Dr. Pathan Yahya Khan, Dr. Ismail. Ma'am, I would like to give my best wishes for the grand success of this webinar. I am here to present the topic Understanding Research Project in Humanities. Dear participants, Ma'am, both English and Urdu. yeah, ma'am. Before going through the topic, I would like to share what is research. Dear participants, research means systematic search for knowledge through method of study, observation, comparison, and experiment. जैसा कि हम देखते हैं कि जब रिसर्च की बात आती है तो वहां पर हमको दिखता है प्रॉब्लम इज देयर इन द सोसाइटी सॉल्यूशन वी हैव टू सर्च आउट बिफोर सर्चिंग द सॉल्यूशन वी हैव टू रिसर्च द knowledge or the study or the observation or the experiment method हम उसको जो है रिसर्च कर सकते हैं रिसर्च के लिए एकदम सिंपल सा जो है कहना चाहेंगे कि रिसर्च वो चीज है कि एक डार्क रूम है और उस डार्क रूम के अंदर जो है आपको एक काली बिल्ली जो है ढूंढ के निकालना है सर्च द ब्लैक कैट फ्रॉम द डार्क रूम इज द रिसर्च देन हियर we would like to share what is research process in humanities. Research process means series of various actions which are necessary to effective research work. It means so many stages are there, so many steps are there. और वहाँ हमको बताना है कि हम लोग अपनी जो है रिसर्च किस तरह से जो है आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि जैसे ही रिसर्च बात आती है तो कैंडिडेट को जो है टेंशन ये आ जाती है कि हम लोग को रिसर्च करना कैसे है तो दीज आर द स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस एंड वन बाय वन वी विल सी व्हाट आर द स्टेप्स then research first is aims and objectives after that materials and method again observation and result and before that we have to select the topic review of literature formulation of hypothesis and we will see one by one these stages in research process these are the stages 1 to 10 and we will see one by one all the steps in research. Step 1 is there selecting the research topic. It is very important. Suppose my research topic was political participation of women in Malegaon. Just see how to select the research topic. Before selecting the research topic, we have to see what are the burning issues around us. First, we have to search it out. जैसा कि मैंने जब पीएचडी शुरू किया था तो मैंने देखा कि मालेगांव इज द वेरी फर्टाइल लैंड फॉर स्टार्टिंग द रिसर्च सो मेनी इश्यूज सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर अराउंड अस इन आवर सोसाइटी वी कैन सी एवरीवेयर और जैसा कि मेरा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस तो मैंने जो है पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करके देखा कि मालेगांव में औरतों का जो है पार्टिसिपेशन जीरो है आज भी जीरो है तो इस टॉपिक को मैंने उठाया अब देखिए डियर पार्टिसिपेंट्स अगर मैं रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर रही हूँ तो मैं तो बहुत हाई फाई देखूंगी कि भाई मुझे बहुत हाई फाई टॉपिक लेना है कि जैसे इंटरनेशनली पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स
इंटरनेशनल का टॉपिक लेती हूँ और अगर उस पर काम करती हूँ तो पूरे ग्लोब को, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुझे कवर करना पड़ेगा. It is highly difficult for me to reach each and every places. Very difficult for me. And along with that, time consuming, money consuming. तो फिर मुझे क्या करना है? तो सेलेक्टिंग जब रिसर्च टॉपिक में कर रही हूँ तो एरिया ऑफ रिसर्च मैटर करता है. आपका टॉपिक कितना छोटा हो सके यह आपने कोशिश करना है पहली स्टेप पे. तो मैंने जो किया, इंटरनेशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं लिया, नेशनल नहीं लिया, महाराष्ट्र नहीं लिया, फिर मैंने उसको समराइज करते 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 और उसको कट करके बेसिक जो है मैंने लिया मालेगांव, जो कि मेरी लोकेलिटी है, मेरी वर्क प्लेस है. एंड इजीली बाय ऑटो रिक्शा आई कैन रीच ईच एंड एवरी प्लेस. देन आपको भी जो है जब आप रिसर्च शुरू करते हो तो आपको इनिशियल स्टेज पे देखना है कि व्हाट शुड बी योर टॉपिक. और टॉपिक का सिलेक्शन रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने डिसीजन क्या लिया कि रिसर्च प्रोसेस में मुझे एक टॉपिक क्या लेना है, एरिया ऑफ रिसर्च क्या लेना है, मेरा टाइम कितना लगेगा, मेरा पैसा कितना खर्च हो गया. तो ये सबसे पहली स्टेज है. then second step is there, define the research problem. It is very important. As we know very well, best planning, half work done. Same is the case with research problem. A problem well defined is half solved. हमने प्रॉब्लम जो लिया है रिसर्च का, क्या हमको सॉल्यूशन देना है, क्या हमको कंक्लूड करना है, तो उसके लिए सबसे पहला है कि प्रॉब्लम हमारा जो भी रिसर्च का हम ले रहे हैं, इट शुड बी वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम प्रॉब्लम को सही तरह से स्टडी कर सकेंगे, सही तरह से जो है हम उसको जस्टिस दे पाएंगे. तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिसर्च प्रॉब्लम पहले वेल डिफाइंड हो जाए. ऐसा ना हो कि आज मालेगांव ले लिए, दूसरे दिन जो है बोल रहे हैं नहीं नहीं नासिक में ना सब औरतों का हम लेंगे, फिर तीसरे दिन बोल रहे हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं ना लेडीज के ऊपर तो अब हम ना जेंट्स को भी ले लेंगे. It should not be there. You must be firm first. Your research problem should be well defined. ये आपने डिसाइड कर लेना है सबसे पहले. After that, third stage is there, establish research objectives. आप क्या, what are you looking for your research work? आपकी फाइंडिंग्स क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले आप जो उस प्रॉब्लम के ऊपर ढूंढना चाह रहे हो तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आप सॉल्व करते जाओगे आपकी रिसर्च आगे बढ़ती चली जाएगी. तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या चाहिए आपके उस प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके उस टाइटल के ऊपर, आपके उस डेजर्टेशन के ऊपर या आपके उस रिसर्च पेपर के ऊपर. तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको क्या रिक्वायर्ड है. अलॉन्ग विथ दैट आपको जो है देखना है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस of that specific information, whether it is relevant to the your subject or not, वो आपको देखना है. ऐसा ना हो कि रिक्वायरमेंट कुछ और है और आप ऑब्जेक्टिव्स कुछ और डाल रहे हैं, इंफॉर्मेशन कुछ और कलेक्ट कर रहे हैं. तो आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन किस टाइप की है और आपकी स्टडी को किस तरह से वो डेवलप करेगा, ये देखना आपका जो है बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहेगा. अलॉन्ग विद दैट, व्हाट आर द प्रायोरिटीज, कौन सा काम मैं पहले करूं? क्या मैं पहले रिसर्च है जो है प्रोजेक्ट लिख डालूं या रिसर्च थीसिस लिख डालूं कि पेपर लिख डालूं, बाद में देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स आखिर में बनाएंगे? इट शुड नॉट बी डन. बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि पीछे से जो है आगे की तरफ आते हैं और फिर क्या होता है कि वो जो है सही जस्टिस नहीं दे पाते हैं और सही डायरेक्शन उनको रिसर्च में नहीं मिल पाता है. तो ये प्रॉब्लम आता ही है. स्टेप 4 इज देयर, रिसर्च डिजाइन. रिसर्च डिजाइन की ये जो स्टेप है, इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ ए रिसर्च प्लान फॉर कैरिंग आउट द स्टडी. अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका रिसर्च प्लान क्या होगा. जैसे कि मैंने अभी जो है तो शेयर किया था कि बेस्ट प्लानिंग हाफ वर्क डन, उसी तरह से रिसर्च प्लान अगर आप बेस्ट बनाते हो, वेल डिफाइंड प्लान अगर आपका रिसर्च का है तो आपकी जर्नी बहुत इजी जाएगी. अदरवाइज आपको रास्ते तो बहुत सारे दिखेंगे पर सही डायरेक्शन में आपकी रिसर्च नहीं जाने वाली.
तो देयर आर मेनी अल्टरनेटिव्स फॉर रिसर्च डिजाइन। चॉइस जो है आपके ऊपर रहेगी, वो इट डिपेंड्स अपॉन रिसर्च पर्पस और आपको करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो है दिया है कि मार्केटिंग में अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च करना है या क्वांटिटेटिव करना है। और आपको क्वालिटेटिव करना है तो उसमें कौन सा फोकस ग्रुप होगा। अगर आपको क्वांटिटेटिव करना है तो सर्वे कैसे होगा, एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, फील्ड वर्क कैसे होगा। यू हैव टू डिसाइड एट दिस स्टेज which type of method you would like to follow for your research plan, वो आपको करना पड़ेगा। स्टेप 5 है स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। आपको सबसे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है। जैसे सपोज हम इमेजिन करते हैं कि पूरी लाइब्रेरी हमारे आसपास है, अब बीच में हम खड़े हैं एंड वी डोंट हैव एनी नॉलेज कि हाउ टू गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। then for that purpose you should divide the information into two, that is primary information and secondary information। तो फर्स्ट हम सेकेंडरी इंफॉर्मेशन जो है कहां से लेंगे, बेस्ट लाइब्रेरी का प्रिंट मटेरियल। प्रिंट मटेरियल में मैगजीन्स, बुक्स सारे आ जाएंगे आपके, रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर, एवरीथिंग। अलोंग विद दैट इंटरनेट इज देयर, वेब मीडिया। अभी मैं वेब मीडिया में भी जो है सबसे ज्यादा मैं आपको जो है सजेस्ट करना चाहूंगी पार्टिसिपेंट्स के बेस्ट वे है इनफ्लिप नेट। इनफ्लिप नेट में आपको शोध गंगा, शोध सिंधु, अलॉन्ग विथ सो मेनी एनलिस्ट इज देयर, और भी बहुत सारे जो है हम लोग है तो वहां पे सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। हमारी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की जयकर लाइब्रेरी ऑनलाइन हम लोग मेंबरशिप ले सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग जो है वेब मीडिया का यूज करते हुए थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाहे आप ऑक्सफोर्ड हो कि कैम्ब्रिज हो, यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी की ऑनलाइन मेंबरशिप ले सकते हो और आप जो है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। जब हमने रिसर्च की थी डियर पार्टिसिपेंट्स, तो फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं रहा करती थी कि हम लोग लाइब्रेरीज को मेंबरशिप ले सके। डॉक्टर रिजवाना हमदानी इस बात से मुत्तफिक होंगी कि हम लोग जो है फिर जाया करते थे पूना की जयकर लाइब्रेरी में, बैठते थे, कई Yes, कई पूना में रहते थे और हम लोग जो है वो काम करते थे वहां पर। तो कहना ये है कि आज तो बड़ी सहूलत हो गई, जस्ट जो है टच द स्क्रीन गेट द नॉलेज, दिस इज द फंडा of digital era and you are very lucky that you are doing PhD in this era। then after that there is primary information, it depends upon if you are doing the survey। आप सर्वे कीजिए, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अगर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, उसके थ्रू आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। और कलेक्ट तो वही चीजें कीजिए जो आपके टॉपिक से, जैसे मेरा टॉपिक था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, तो फिर मैं जाके उस पर्टिकुलर लेडी से, उस कॉर्पोरेटर से, उस लेडी मेयर से जो इंफॉर्मेशन लूंगी वो सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड की लूंगी, ना कि उसकी पर्सनल, आपके घर में क्या चल रहा है, हस्बैंड जी कैसे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये नहीं। दिस इज अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। आई डोंट वांट सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर माय पीएचडी वर्क, रिसर्च वर्क। देन आपको वही इंफॉर्मेशन लेना है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। अभी स्टेप 6 है डिजाइन द मेथड ऑफ कलेक्टिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन। आपको क्या करना है, जो नीडेड इंफॉर्मेशन, आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कैसे करना है। अब इसमें जो है आपकी स्मार्टनेस दिखाना है आपको। या तो फील्ड में आप जाओ, सर्वे के फॉर्म ले लेके और 1 by 1 डोर टू डोर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, दिस इज वन ऑफ। अलॉन्ग विद दैट वाया ईमेल, टेलीफोन, फैक्स तो खत्म हुआ, अभी टेलीफोन भी खत्म हुआ, फिर मोबाइल फोन है आपके, फिर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उसके थ्रू जो है अपने क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए। या फिर जो है आपको पर्सनल इंटरव्यू लेना है तो टाइम लीजिए, सारी पूरी तैयारी करके आपको जाना है। जब इंटरव्यूअर जो है वो आपको टाइम देता है, इंटरव्यूवी जो है तो टाइम देता है, तो आपको एज ए इंटरव्यूअर वहां जाना है और उसी टाइम में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो कुछ आपको पूछना है, या तो आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए या तो आप फॉर्म ले गए तो उसको भर लीजिए। पर यहां पर भी मेथड ऑफ कलेक्टिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन, उसकी डिजाइन पहले आपको बनाना है। नहीं तो आप जो है वहां जाएंगे बोलेंगे अरे आप पूछो क्या,
क्वेश्चन एयर इज नॉट देयर, वो आपका फॉर्मेट नहीं है आपके पास, आपको क्या पूछना है आप सब भूल गए। तो आपको सारी तैयारी करके वहां पर जाना है और नीडेड इंफॉर्मेशन, अगर आप फील्ड स्टडी कर रहे हो, फील्ड विजिट कर रहे हो, तो आपको जो है वो जो कलेक्शन करना जरूरी है। स्टेप 7 है डिजाइन द क्वेश्चन एयर। अब क्वेश्चन एयर बना रहे आप, उसकी डिजाइन कैसी होगी, कितना उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन रखना है बिल्कुल शॉर्ट में, कितना उसका सोशल बैकग्राउंड रखना है बहुत शॉर्ट में। मेजर जो है मेरा पॉलिटिकल क्वेश्चन रहेगा, अगर इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मार्केटिंग का या जो भी बिजनेस से फील्ड का आप कर रहे हो रिसर्च, तो आपको जो है क्वेश्चन एयर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए उसकी जरूरत रहेगी, तो आपको करना पड़ेगा। और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप मार्केटिंग में रिसर्च कर रहे हो तो आपको डेटा कलेक्शन जो है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, जो क्वेश्चन एयर है, उसको इस मैनर में बनाना जरूरी रहेगा कि इजी टू यूज और इजी टू अंडरस्टैंड बाय द रिस्पोंडेंट। जब आप उस क्वेश्चन एयर को एडमिनिस्टर कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन एयर भरने वाला रिस्पोंडेंट वो सही तरह से आप क्या चाह रहे हो इंफॉर्मेशन वो समझ सके, यानी एकदम इजी लैंग्वेज में हमको अपना क्वेश्चन एयर बनाना है, यूजर फ्रेंडली बनाना है, ताकि इजीली हम लोग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। उसके बाद आता है स्टेप 8 मैनेज एंड इम्प्लीमेंट द डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्ट हो गया है, अब डेटा कभी कभी अननेसेसरी डेटा भी आ जाता है, वो इस तरह से आता है कि हमको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकालना है तो थोड़ा सा घुमा के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि हमारा वो रिक्वायर्ड डेटा जो है कलेक्ट हो जाए। तो रिसर्चर को यहाँ पर डेटा तो कलेक्ट हो गया है, तो हाउ टू मैनेज द डेटा, ये प्रॉपरली मैनेजमेंट आना चाहिए। साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट अब कैसे करें, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अपना पूरा प्लानिंग बेस्ड बनानी पड़ेगी कि ये डेटा तो कलेक्ट हो गया, बहुत ह्यूज डेटा है, पर डेटा कलेक्शन के बाद हाउ टू मैनेज दैट कलेक्टेड डेटा प्रॉपरली, ये हमको देखना है और इसके ऊपर प्रोसेसिंग हमें करनी रहेगी। स्टेप 9 है एनालाइज एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। रॉ रिसर्च डेटा आपके पास मौजूद है, जो भी फॉर्म्स, जो भी इंटरव्यू आपने लिया, जो भी आपने ईमेल लिया, जो भी आपने गूगल फॉर्म में सारे क्वेश्चन एयर भरवाए, तो अभी आपके पास रॉ रिसर्च डेटा है। इट नीड्स टू बी एडिटेड, टेबुलेटेड और एनालाइज्ड। तो यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे कि हम लोगों को बहुत सारे ऐसे ऐसे जो है तो अभी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि रॉ रिसर्च डेटा हमने डाल दिया और हमको पूरा टेबुलर फॉर्म में एनालाइज होके सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि आज तो बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए डिजिटल बेस्ड होने की वजह से रिसर्च एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ डेज, और हम लोग इजीली ये जो एनालाइज करना है और इंटरप्रीट करना है रिजल्ट को इजीली हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट उसको हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने वेरिएबल्स हैं उसको वह आइडेंटिफाई भी करना है, डिस्कस भी करना है, और फिर प्रॉब्लम का हम लोग कंक्लूजन देंगे। तो आगे है एनालाइज डेटा, तो आपको जो है क्या करना है, अपना डेटा उसका एनालिसिस करना है। देखिए जितना ज्यादा हम लोग उसका बेहतरीन तरह से ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उतना बेहतरीन हमारा रिजल्ट जनरेट होगा। तो डेटा जो है इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस, जैसे उसकी एडिटिंग है, कोडिंग है, और उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में किस तरह से लाएं, उसके ऊपर डिस्कशन क्या हुआ है, जितना बेहतरीन करेंगे उतना अच्छा हमारा कंक्लूजन आएगा, उतना अच्छा हमारा सजेशन रिकमेंडेशन पार्ट आएगा, और फर्दर रिसर्च के लिए आगे आने वाले लोगों को एक नई दिशा मिलेगी। ये हमने कोशिश करना चाहिए इस स्टेज पे। और आप देखिएगा कि डेटा जो है इंटरप्रीट कैसे करना है, तो हम देखेंगे कि डेटा तो कलेक्ट कर लिया हमने, उसका एनालिसिस हमने कर लिया, कंक्लूजन हमने निकाल लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको इंटरप्रीट करेंगे। यानी स्टेप 10 है प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनल रिसर्च रिपोर्ट। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। देखिए आप अगर याद करिए तो हम लोग जब पढ़ते थे हमें कहा जाता था एस्से राइटिंग है,
तो इससे पहले हम लोग रफ कॉपी पे लिखते थे, रिजवाना मैम याद होगा आपको भी, पहले रफ पे लिखते थे, फिर कैंसिल करते थे, फिर सेकंड ड्राफ्ट करते थे, फिर थर्ड ड्राफ्ट करते थे, एंड देन फाइनल ड्राफ्ट। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर भी रिसर्च रिपोर्ट के फाइनल ड्राफ्ट से पहले 2-3 ड्राफ्ट बनाना है और उसको बार बार लगातार चेंजेस करते हुए आखिर में जो फाइनल रिसर्च ड्राफ्ट होगा वो सबसे बेहतरीन हमारा बनने वाला है, ये हमने ध्यान देना है। साथ ही साथ फाइंडिंग्स जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, बट इट शुड बी इन कॉन्साइज्ड वे में, और फिर रिसर्च रिपोर्ट जो हमको कम्युनिकेट करना है तो बहुत ज़्यादा फिर मैं कहूँगी कि इजी वे में हम लोग अपनी रिसर्च रिपोर्ट पेश करें, प्रेजेंट करें, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे रीडर जो हैं, हमारे जो है क्लाइंट्स जो हैं, वो सही तरह से उसको अंडरस्टैंड कर सकें। एंड जब हम रिसर्च में जा रहे हैं, हालांकि ये जो एक अलग टॉपिक है, बट कुछ बातें मैं यहाँ मेंशन करना चाह रही हूँ। मैम टाइम है ना, बोल सकती हूँ रिजवाना मैम? Yes, ma'am. Yes, Okay. yes. So before going to research, whether it is PhD research, whether it is research project, whether it is research paper writing, सबके लिए कुछ qualities हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है. This is friendly with respondent. A good researcher must have the quality to become friendly with the respondent. यानी यहाँ पर आपको जब आप रिसर्च प्रॉब्लम लेके जा रहे हो, आप क्वेश्चनियर लेके जा रहे हो वहां पर, और आप रिसर्च कर रहे हो, तो आपके जो रिस्पोंडेंट है उनसे फ्रेंडली होना है। जैसे मालेगांव में जब मैं रिसर्च कर रही थी तो उस वक्त कॉर्पोरेटर्स के साथ मैं बातें कर रही थी, तो सेम लैंग्वेज यूज कर रही थी जो लैंग्वेज हमारे मालेगांव की है, करे खाला का करती, जस्ट लाइक दैट। और वो सेम लैंग्वेज में वो मेरी खाला कॉर्पोरेटर जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी वो जवाब दे रही थी, एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि अच्छा हुआ भाई, तो इतनी अच्छी से पूछ रही है, नहीं तो मैं कैसे बोलतूं। दिस वाज देयर। उसके बाद है लीस्ट डिस्करेजमेंट। लीस्ट डिस्करेजमेंट मीन्स क्या करना है कि पीपल आर नॉट कोऑपरेटिव टू यू फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, देन आपको डिस्करेज नहीं करना है। आप बहुत सारी डिफिकल्टीज होगी, जैसे मैं मेरी रिसर्च में जब निकली तो मुझे तकलीफ बहुत आई। वो कॉर्पोरेटर जो कि कॉर्पोरेशन के हॉल में बैठ के आती थी, 10 साल से कॉर्पोरेटर है, फिर भी वो मुझसे इंटरव्यू करने को तैयार नहीं थी, एंड उसका हस्बैंड परमिशन ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसको लगता था कि ये कोई डेटा गवर्नमेंट को तो नहीं जा रहा। बार बार लगातार मैं उनके घरों को जाती थी, वो मुझे वापस कर देते थे, कभी कभी तो बेइज्जती भी कर देते थे, घर में रह के बोलते थे नहीं है, और अंदर भी नहीं बिठाते थे। बट मैंने अपने आप को इनकरेज ही किया कि आज नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट कल करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो रिक्वायर्ड डेटा था आफ्टर फेसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज मुझे मिला, और मैंने अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया। गुड रिसर्चर की क्वालिटी में आता है कि फ्री फ्रॉम प्रीजुडाइसिस, यानी जब आप स्टडी कर रहे हो तो रिसर्चर को जो है वो इस तरह का बायस स्टडी नहीं करना है कि भाई एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और वो आपको रिसर्च लेके गए और आप जो है लेडीज को अच्छा बता रहे क्योंकि आपका वुमेन स्टडी है, जेंट्स को खराब बता रहे। इट शुड नॉट बी हैपन देयर। राइट टू इक्वालिटी सबको है, राइट टू लिबर्टी सबको है, उसको ध्यान में रखते हुए जब आप स्टडी कर रहे हो तो यू शुड नॉट बी बायस और यू शुड नॉट बी प्रेजुडाइज फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन और फॉर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कैपेसिटी ऑफ डेप्थ नॉलेज। एक गुड रिसर्चर वही है कि थोड़े को ढेर समझ जाए। देखिए पार्टिसिपेंट्स हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास बिल्कुल जो है गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है और उनको जो है थोड़े समय बहुत ढेर समझ में आता है। तो गुड रिसर्चर की क्वालिटी यही है कि ही और शी शुड हैव द कैपेसिटी टू कलेक्ट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन इन लिटिल टाइम। आप कैसे किस तरह से करते हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वालिटी एंड यू मस्ट बी ट्रूथफुल। ए रिसर्चर मस्ट बी ट्रूथफुल, जो सच है उसको समाज के सामने लाना। जैसे कि जो है मेरी रिसर्च के दौरान मैंने ये देखा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में कॉर्पोरेटर्स को बुलाती थी मैं प्रोग्राम के लिए, तो कॉर्पोरेटर लेडी थी, आती थी, साथ में उसके हस्बैंड जी भी,
और हस्बैंड जी उसको ऑडियंस में बिठाते थे और चीफ गेस्ट की चेयर पे वो बैठते थे। तो मैंने कहा नहीं कॉर्पोरेटर आप नहीं हो, कॉर्पोरेटर वो है, लेडी को मैंने बुलाया है। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो सामने ही बैठेगी ऑडियंस में। तो ये चीज मैंने अपने रिसर्च थेसिस में लिखा है कि it is a bad pathetic condition of Malegaon society that women is not providing the proper place which she deserves. She is running very successfully her house as a home minister. She is administering all the household job. Then she can handle each and every situation, whether it is administrative post or political post. She can handle। बट वहां पर हमने देखा कि रिसर्च में मुझे ऐसे ऐसे ट्रूथ सामने आए जो मैंने फॉल्स रिपोर्ट लिखने की बजाय सही रिपोर्ट्स जो है वो पेश की। और एक गुड रिसर्चर वही होता है जो सच की बात रखे, सच का सामना करे। एंड आगे आता है कीन ऑब्जर्वर। if you are a good researcher, then it is your quality, you should be keen observation and deep observation. This quality should be there in a good researcher. After that there is careful in listening. A good listener must be there before learning, before doing anything, before speaking. You must be a good listener। और रिसर्चर को तो मोर केयरफुल्ली लिसनिंग करना है जब वो रेस्पोंडेंट के पास रिसर्च के लिए गया है। और क्वालिटी ऑफ रिसर्च अगर आपके पास है तो लो इंफॉर्मेशन भी आपके पास है, या उसने खामोशी में धीरे से भी विस्पर कर दिया है, विस्परिंग की है और धीरे से कुछ बातें कह दी है जो ओपनली वो नहीं बोलना चाह रहा है रिस्पोंडेंट, पर आपने सुन लिया, जो कि मैंने मेरे रिसर्च में की। ऐसे ही वक्त जो रिसर्च के लिए जाती थी जब वो कॉर्पोरेटर का हस्बैंड घर पे ना हो, ताकि मुझे वो खुल के बातें कर सके। हस्बैंड रहेगा वो खुल के बात नहीं करेगी, ये मुझे पता था। तो मैं क्या करती थी, खामोशी में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी और जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली अकेले में उसको सुनने में वो बहुत यूजफुल रही मुझे। और लीस्ट टाइम कंज्यूमर रिसर्चर कैसा होना चाहिए, मस्ट हैव द कैपेसिटी लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग। जब आप कहीं रिसर्च पे गए हो, आप तो रिस्पोंडेंट से मिलने गए हो, आप कुछ काम कर रहे हो, तो आपको शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो आपने क्या करना है, आपका काम करना है और निकलना है। फिर जो है वो अच्छी होस्ट है, ठीक है, वो चाय पानी बोल रही है, उसका दिल रखने के लिए आप रुको, पर लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम आपको है, इसलिए आपको लीस्ट टाइम जो है कंज्यूम करना है। और रिसर्च के लिए जैसा कि अभी नई गाइडलाइन आई है, हमारे टाइम में तो 3 साल ही लगता था, पर अभी नई गाइडलाइन में 2 साल में थीसिस सबमिट करो और 6 महीने के अंदर सबमिशन का वर्क कंप्लीट करो और विद इन 2.5 ईयर 2.5 साल में आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। तो बहुत अच्छी बात है, शॉर्टेज ऑफ टाइम है आपके पास और टाइम का सही फायदा उठाइए, मौके पे चौका लगाइए और फिर देखिए यू आर बेस्ट जो है पीएचडी स्टूडेंट और आप अपना काम कर लेते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल, यहाँ पे हम देखेंगे इकोनॉमिकल रिसोर्सेस। पीएचडी कर रहे थे, हमारी सर्विस भी पक्की नहीं थी, रिजवाना मैडम चाय पीने को पैसे नहीं रहते थे और हम रिसर्च करने निकलते थे रिसर्च फील्ड में। एट दैट टाइम हमारी फाइनेंशियल लिमिटेशन है, हमको पैसे भी खर्च करना है, तो बहुत सारी जगहों पे उस वक्त मैडम मैं पैदल जाया करती थी। कॉर्पोरेशन के 10 चक्कर लगाए हमने पैदल। कभी हमने जो है तो ये भी नहीं देखा कि हम लोग ऑटो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, कि हमारा खाना पीना नहीं हो रहा है, भूखे प्यासे एक वड़ा पाव में दिन दिन भर रिसर्च किए हैं मैडम। तो एक गुड रिसर्चर वही है कि उसको एक जुनून, एक पैशन हो कि मुझे ये मेरा रिसर्च वर्क कंप्लीट करना है। क्या हुआ मेरे रिसोर्सेज बहुत कम है, क्या हुआ मेरे पास फाइनेंस नहीं है, क्या हुआ मेरे पास परचेसिंग पावर नहीं है, पर मुझे मेरी रिसर्च कंप्लीट करनी है, ये आपने देखना है। ये आपको जो है बहुत आगे ले जाएगी। आगे है लो केयर ऑफ डिसअप्रूवल ऑफ सोसाइटी। डोंट थिंक अबाउट सोसाइटी, समाज के लोग क्या बोलेंगे। पैदा होने से मरने तक हम लोग यही सोचते रहते, लोग क्या बोलेंगे। अरे लोग कुछ नहीं बोलते, उल्टा बोलते मर गए, अच्छा हुआ मर गया। तो गुड रिसर्चर को कोई केयर नहीं करनी चाहिए कि समाज आपके इस रिसर्च से अप्रूवल दे रहा है कि डिसअप्रूवल दे रहा है। आफ्टर गेटिंग मैरिज मेरा हुआ कि शादी के दूसरे हफ्ते में मैं रिसर्च
जो है पीएचडी की रिसर्च के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए गई, और इसका क्रेडिट मेरे हस्बैंड जी को जाता है कि उन्होंने बोला कि शादी के बाद घूमना फिरना बाद में, पहले जाकर रजिस्ट्रेशन करा के। तो उस वक्त बड़ा अपोजिशन हुआ इन लॉज की तरफ से, और बहुत ज्यादा जो है मुझे अपोजिशन का सामना इस तरह से हुआ कि डिसअप्रूवल वाज फ्रॉम एवरीवेयर, और बोले अभी नई नई दुल्हन और कहाँ जा रही, तो बोले पीएचडी रिसर्च के लिए रजिस्ट्रेशन करने पूना। व्हाट जो है क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड, अगेन कहूंगी कि उन्होंने कहा कि भाई आपको जाना है, बस खत्म हो गई बात, आपको समाज के बारे में सोचेंगे, ये समाज तो तुम्हें जीने नहीं देगा। और आई एम वेरी लकी कि बिहाइंड माय सक्सेस देयर आर टू मेन, वन इज माय फादर एंड सेकंड इज माय हस्बैंड, और मैं उनके सहारे आगे ही आगे बढ़ती जा रही हूँ। और फिर माँ की दुआएं तो साथ में है ही है, और जिसके साथ माँ की दुआएं होंगी पार्टिसिपेंट्स, वो लाइफ में तो आगे बढ़ना ही है। तो समाज का छोड़ दें हम, वट एवर वी वांटेड टू डू वी कैन डू, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, एंड आफ्टर दैट देयर इज एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट। A researcher would be a good one if he has full command over his subject. आप जिस भी सब्जेक्ट के हो, ह्यूमैनिटीज में चाहे आप लैंग्वेजेस के हो, सोशल साइंसेस के हो, या फिर कॉमर्स के हो, टेक्नोलॉजी के हो, साइंस के हो, व्हाट एवर द सब्जेक्ट, आप उसमें मास्टर्स हो, तो आपको क्या करना है, यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन योर सब्जेक्ट फर्स्ट। अगर आप एक्सपर्ट हो तो जो कुछ भी थियोरेटिकल स्टडी है वो आपके फील्ड वर्क में इजीली यूजफुल रहेगी, और आप अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट को जस्टिस दे पाओगे। आगे की क्वालिटी आती है फ्री फ्रॉम हेस्टी स्टेटमेंट्स। जल्दी मत करो आप अपनी स्टडी को प्रेजेंट करने में, कि आपका इनवैलिड और रॉन्ग स्टेटमेंट सोसाइटी के पास ना जाए। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द साइड ऑफ ए गुड रिसर्चर। वो रिसर्चर अपनी स्टडी जब भी प्रेजेंट करेगा तो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन रियलिटी एंड वैलिडिटी, इट शुड बी देयर, रियलिटी हो सबसे पहले तो, एंड द नॉलेज और द डेटा और द कंक्लूजन which is presented by you should be valid। तो ये हमको ध्यान देना है अपने स्टेटमेंट में, अपने कंक्लूजन में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड इन कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़े से मैं अपनी बात सामने वाले को समझा देना, और इस वे में अपना कन्वर्सेशन करना, कि क्या होगा कि सामने वाला बोर भी नहीं होगा, और आपकी बातों से इतना इम्प्रेस्ड होगा कि सिंपैथेटिकली वो आपको कोऑपरेट करना ही करना है। कि आपा जान इतना अच्छा बोला थी भाई, जब मैं रिसर्च को जाती थी मुझे वही बोलते थे, कम पढ़ी लिखी औरतें थी कॉर्पोरेटर्स, या फिर एकदम इलिटरेट भी थी, वो बोलती थी आपा इतना अच्छा बोला थी, तो एक क्यों ना मैं नॉलेज दे दूं जो भी मांग रही। अब मुझे नॉलेज मिलती थी। तो यू मस्ट हैव द स्किल एंड आर्ट टू बी लाइक्ड बाय द पीपल। और हमेशा मैं बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, आपको भी कहूंगी कि यू शुड हैव विन विन पर्सनालिटी, यू शुड बी वेलकम इन ऑल सीजन। तो ये ऐसी पर्सनालिटी आपको रखना है, एंड उसका बेसिक है गुड इन कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपको हैविंग क्लियर टर्मिनोलॉजी, गुड रिसर्चर के पास टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। आपके सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी है, आप उसको इस तरह से यूज कीजिए कि आपका रिस्पोंडेंट उसको समझने में डिफिकल्टी ना आए, या फिर आप उसके पास अपनी टर्मिनोलॉजी जो आपके सब्जेक्ट की पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है उसको इजी वे में जाके उसको एक्सप्लेन करना है, और उसके लिए इजी हो जाएगा कि उस क्वेश्चन का वो रिस्पोंडेंट सही तरह से आंसर कर सके। अभी यहाँ पे रिसर्च टूल्स हैं, तो यू शुड बी ट्रेन्ड इन रिसर्च टूल्स। ए गुड रिसर्चर विदाउट टेक्निक और टूल्स वो काम कर ही नहीं सकता है। रिसर्च के लिए यू मस्ट बी एक्सपर्टाइज इन योर रिसर्च टूल, वो करना जरूरी है। बहुत सारे जो है आप देखिएगा कि सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उसकी ट्रेनिंग लीजिए और उसको यूज कीजिए। उसके बाद ड्रेस एंड बिहेवियर सेम टू द एरिया। जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि रिसर्चर जब उस एरिया में जाता है स्टडी करने के लिए, तो उसका ड्रेस और बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, वो करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं मेरे रिसर्च में जाती थी तो भाई बुर्का लगाए हुए हैं, हिजाब में हैं, और जब जा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं, कैसे हो आपा, कैसे हो खाला,
बड़ी अच्छी तरीके से वेलकम करते थे मुझे। बहुत सारी बार हकाली भी गई, मैं घर से निकाल भी दी गई उनके, बट मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा और फिर मैंने उनको कन्विंस किया ही कि वो मेरी बातों को समझें। तो आप भी जिस एरिया में जा रहे हो आपका रिसर्च करने, तो उस एरिया के ड्रेस और बिहेवियर का आपको ध्यान रखना एज ए रिसर्चर बहुत जरूरी है, खासतौर से जहाँ मल्टी कल्चरल आपके रिस्पोंडेंट हो, मल्टी रेशियल हो, तो आपको करना बहुत जरूरी है। यू मस्ट बी मोर एनालिटिकल। रिसर्चर वुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स ज्वाइन हैं इस वेबिनार में, बहुत सारे वुड बी डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे रिसर्च वर्क कर रहे हैं। तो ये सब के सब दीज आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, और ये रिसर्च कल्चर के बीच में रहने वाले लोग। पीएचडी इज द फर्स्ट स्टेप टू डू द रिसर्च। अब पीएचडी हो गए, रिसर्च की शुरुआत तो यहीं से हुई, अब हमको आगे रिसर्च करना है। यू शुड नॉट स्टॉप हियर, पोस्ट डॉक करो या आगे की जो है रिसर्च करो, मेजर माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट करो, ये हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। हमारी सेपरेट आइडेंटिटी, हमारा स्टेटस, हमारा पैट्रोनेज बहुत अलग है, तो हमें वो कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह नैक ने भी रिसर्च कल्चर को बहुत बढ़ावा दिया है, और सिटी कॉलेज जैसी कॉलेजेस वो क्या कर रही हैं, रिसर्च कल्चर को आगे ही आगे लेके जा रही हैं। एंड दिस इज द ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय डॉक्टर हमदानी रिजवाना, डॉक्टर आरिफ अंजुम टू ऑर्गेनाइज सच एक्टिविटी, रिसर्च एक्टिविटी। तो हम प्रे करेंगे मैडम कि आपका कॉलेज आगे ही आगे जाए और नेक्स्ट टाइम आपको A++ ग्रेड मिले नाइक का। आगे आता है इक्वालिटी एंड जस्टिस। गुड रिसर्चर जो है शुड बिलीव ऑन इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी हर टाइप के लोग मिलेंगे, हर टाइप के रेस्पोंडेंट रहेंगे, कम पढ़े लिखे, पढ़े लिखे या बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड, सबके साथ आपको इक्वल ट्रीटमेंट करना है और आपके टॉपिक को आपको जस्टिस देना जरूरी है। दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच आई शेयर्ड विथ यू डियर ऑडियंस। आप अगर चाहें पार्टिसिपेंट्स तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Questions are welcomed. Yes, Good morning, everyone. yes. My name is Momin Hasiba. I am a student of SYBSc. Ma'am, I have a question for you. Very nice, very good. Suggest us few websites and source where we can find a research paper for our research. Few websites and source. वेबसाइट, सो मेनी प्लेटफॉर्म्स आर देयर। फर्स्ट जैसा कि मैंने कहा कि इनफ्लिप नेट जो है ना, यूजीसी का इनफ्लिप नेट, आप वहां पे जाके जो है जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपको फौरन जो है मिलेगी शोध गंगा, जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने रिसर्च बेसिस हैं, जितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे आपको वहां अवेलेबल मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट रिसर्च गूगल स्कॉलर इज देयर, सो मेनी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां जाके आप जो है क्या कर सकते हो, अपने जो है तो रिक्वायर्ड टॉपिक के ऊपर आप जो है, जैसे कि हम लोग गूगल के जो है इस पे ही जाते हैं सर्च इंजिन पे, तो वहां पर जैसे ही हमने टॉपिक डाला, जिस टॉपिक पे आपको रिसर्च पेपर चाहिए, आपको देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर, जाते जाइए, थाउजेंड्स पेपर्स आर अवेलेबल देयर, वहां पे से ले सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आपको जो है मिलेंगी वहां पर कि भाई जिसकी वजह से आप रिसर्च पेपर देख सकते हो। मैगजीन्स हैं, बहुत सारे जर्नल्स हैं, बहुत सारे जो है ऐसे यूजीसी केयर जर्नल्स है, इंटरनेशनल रेप्यूट जर्नल्स है, ब्लाइंड रिव्यू, पीयर रिव्यूड, रेफरीड जर्नल्स अवेलेबल है इंटरनेशनली, एंड यू कैन सर्च वट एवर नॉलेज। बेटा यू आर वेरी लकी, यू आर लिविंग इन डिजिटल एरा, और आपको इतनी सहूलतें हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। एक अच्छा रिसर्चर बनने के लिए एक बेहतरीन लैपटॉप या कंप्यूटर, एक बेहतरीन इंटरनेट कनेक्टिविटी अलॉन्ग विद आप, और बैठ जाइए और बंद कर लीजिए 2 साल तक अपने आप को, सिवाय फील्ड स्टडी के आप बाहर मत निकलिए, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के लिए बाहर मत निकलिए, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद बैठ जाइए और आप देखिए कि डॉक्टर हमदानी, डॉक्टर शकीब, डॉक्टर आरिफ अंजुम जैसे रिसर्चर आप बनेंगे बेहतरीन,
हाँ, दे आर PhD गाइड्स ऑल्सो, तो आप भी कर सकते हो बेटा. Thank you, Thank ma'am. Next thank you. question. वेरी नाइस, थैंक यू. Next question. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम. Alaikum salam. My name is Ansari Muhammad Ashir Ishtiyaq Ahmad. गुड. I am pursuing MA Urdu MSB College. वेरी नाइस. मैम एक क्वेश्चन का कंफ्यूजन था आपसे क्लियर करना था. जी बोलिए. वो हैविंग टर्मिनोलॉजी, कैन यू रिपीट दिस? ओके ओके. जैसे आप उर्दू के आपने कहा, तो यस. टर्मिनोलॉजी उर्दू की जो है, तो उसको क्या होगा, जैसे अभी मैं पॉलिटिकल साइंस की हूँ, या फिर मराठी लैंग्वेज का कोई बंदा है, या हिंदी जिसको आ रही है, उसको आपकी टर्मिनोलॉजीज, मैंने तो उर्दू पढ़ा है, मुझे आएगी टर्मिनोलॉजी कि भाई जो है व्हाट इज नावल, व्हाट इज अ नावल के जो स्टेजेस हैं अलग अलग, बहुत सारे आपके ऐसे हैं कि मुझे तलफ्फुज भी नहीं अदायगी होती है आपकी टर्मिनोलॉजीज की, इजंट इट? तो वो कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी आपका जो सामने वाला ऑडियंस है, या सामने वाला आपका जो व्यूअर है, या सामने वाला जो रीडर है, जो आपको पढ़ेगा रिसर्च फाइंडिंग को, तो उसको वो टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वो टर्मिनोलॉजी अपने रिस्पोंडेंट के पास जब आप गए हो, जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिससे आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो पहले उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपके उर्दू की जो टर्मिनोलॉजी है, वो उसका मीनिंग क्या निकलता है. हिंदी अगर वाला है, हिंदी वाले को बताइए. मराठी नोइंग है, उसको बताइए. समझ में आ रहा है? तो इसी उर्दू में आपको बताना ही पड़ेगा. समझ में आ रहा है? टर्मिनोलॉजी Thank की you, ma'am. बहुत जरूरी है. यस. तब Thank you, जाके जो ma'am. है आपको सामने वाला रिस्पॉन्ड थैंक यू करेगा. सो मच मैम. वेरी नाइस, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन. Thank you, ma'am, for explaining research process in a simple language and in a comprehensive Good manner. morning, ma'am. Now, question answer session is over. We are moving a step forward. Now, I welcome our next speaker, Honorable Dr. Muhammad Mukhtar Khan, sir. Sir, please welcome, join the session, and you may start your presentation. Yes, am I audible to everyone? Yes, sir. हाँ अभी एक मिनट. Yes ma'am, is it okay? Yeah. Okay ma'am, okay wait, I'll share it. ये मैडम इसको बोलते हैं. Yeah, is it okay friends? Yes, yes. Okay. Assalamu alaikum and good morning to everyone. Walaikum assalam. I first of all thanks to everyone, especially the MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. The founder, Mr. Late Karamveer Hire sir, the president, Dr. Prashant Datta Hire sir, principal Dr. Arif Anjum, and the organizing committee, Dr. Arif sir, Dr. Hamdani ma'am, and Professor Imran Ahmed. Thank you so much to all of you from top to bottom for giving me an opportunity for this national levels webinar. So the previous, ma'am, 1 hour is given to me, no? Yes, sir. Okay, ma'am. I have gone through the previous the speaker, Dr. Anjum ma'am. Sorry, Dr. Salma. Yeah, Yes, Dr. yes. Salma. So on the basis of that, I like to make some changes in my presentation because many things, ma'am, she has already spoken about that. Is it okay, ma'am? Hamdani Yes, ma'am? yes. Yes, yes. Yeah. Otherwise, what will happen? There will be a duplication of work. Whatever Yeah. the ma'am has spoken, that will be repeated. That's the reason I thought कि मैं बैठूंगा नहीं, लेकिन मैं बोला ठीक ठीक है.
मैम का सेशन है, I will sit and the whole session really I I was laughing and I was enjoying the session. Ma'am, she has already spoken from bottom of her heart. Thank you, sir. It's honor for me. Yeah, Thank yeah, you. seriously, ma'am. And credit goes to Dr. Rizwana Hamdani for inviting me. Real, really, I really, ma'am, I enjoy a session and It's a जैसे Malegaon what you style, said, sir. Sir, it's a Malegaon yeah, style. yeah. Thank you, thank you. From local to vocal, yes, ma'am. Yeah. Especially you said about the credit goes to your two male member, your husband and your father. Yeah. Here is the opposite side. Here in my case, the credit goes to two female side. Very nice. One my wife and the most prestigious person in my life, that is my mother. Very nice, sir. Yes, and Oh, sir, वो especially जो है ना the सर वो एक कहा yes, जाता है ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमेन. तो सर मेरा ये yes, कहना yes, है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर आर थ्री वुमेन. वन इज मदर, second is yes, wife, third is daughter. Same is the case with yeah, me. Behind my success there are three men. One is my father, second is husband, and third is my son. तो सर ये बोलना okay, चाहिए सबने. तो वो गलत बोलते हैं सर. It's my yes, personal opinion. yes, Sir, yes, shall ma'am, we yes. begin? I'm taking your time. Yes, ma'am. Sorry. Thank you. No, Yes, no, no, sir, ma'am. shall we No, ma'am. begin? Yeah, ma'am. So we all are aware about the research journey from idea to publications. Wait, huh? Yeah. So the basically the process of the research, what I mean, it starts from Igman. It starts from the idea generation. Ma'am, I here in this case, while going through the ma'am slides, I will be using basically two slides, two presentation. One presentation which I prepared for today's session, another presentation which I've already prepared and I've already talked in my college itself. That is the research one, and I'll be going here and there. That is the Google and the another important thing. Friends, the most important thing is your selecting of your the research topic. This is the most important thing in case of your research journey. As you can understand, the topic says the research journey from idea to publication. ये पूरा आपका जो है रिसर्च जर्नी है, इट स्टार्ट फ्रॉम द आइडिया टू द पब्लिकेशन प्रोसेस. द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आइडिया जनरेशन. नाउ व्हाट इज आइडिया जनरेशन? आइडिया जनरेशन के अंदर आपका आता है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट योर रिसर्च टॉपिक. बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर इट could you hear and understand? Yes. Okay, ma'am. Because whether it is your MCom project, whether it is your MPhil project, whether it is your minor, major, or whether it is your PhD project, that is all about dissertation. Everything depends upon your title. जो भी आपका title है, that means a lot. Because from the जो भी आपका title है, research topic है, उसी में से आपके your problems will be decided. From your research topic, your problems will be there. From the problems, your objectives will be there. And from your objectives, the further chapters, that is the chapterization, will depend ultimately on your topic itself. So in some cases which हमने अपने कॉलेज के अंदर देखा, कुछ स्टूडेंट्स के टॉपिक ही रिजेक्ट कर दिया था सर ने. इनफैक्ट इन माय केस, बिफोर आरआरसी कमिटी तो फाइनलाइजेशन था, उसके पहले कमिटी थी which has been held in our college itself. तो कॉलेज के अंदर जो मेरा जो रिसर्च टॉपिक था, उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, एंड दे आस्क्ड मी टू reframe the topic. So I have reframed, and ultimately it was selected by that committee and also by the RSC committee. So in a nutshell, जो आपका research topic है, that is the most important aspect. Now, coming to the another slide, that is idea, the sparking curiosity. So it is all about the research interest. You must be having your research interest in whatever is the project. In some cases, in our case,
I'll take an example of one of our student. His name is was Mohsin. ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये जो हमारा बच्चा था वो टीवाई का बच्चा था, और टीवाई का बच्चा होने के साथ साथ ही वॉज प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट. he was not doing his PhD anything, purely BCom का बच्चा, and he was preparing for his the project. And try to understand, वो जो टॉपिक था ना, वो टॉपिक was selected by TEDx Switzerland, and during his TY only he was called that for that topic at Switzerland. And after that the international doors was open for him. Yeah, and he was selected for one of the prestigious college of, I think so, Cambridge or Oxford. And now I think so he has completed his PhD topic. So try to, मैं जो फोकस करना चाह रहा हूँ वो आपके टॉपिक के ऊपर, टॉपिक शुड बी वेरी क्लियर, और वो इंपॉर्टेंट करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर. देखो बहुत सारी चीजें डंपिंग भी होती है, बट यू शुड नॉट गो फॉर डंपिंग. किसी ने आपके ऊपर डंप कर दिया, यू शुड आपको अपना इंटरेस्ट, क्योंकि काम आपको ही करना है. Yes, try to understand. You have to do your own work. So that is the reason you should come up with your area of interest. आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अब तक ही मैंने अपने रिसर्च टेन्योर के अंदर समझा, दैट इज व्हाट रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं इसको. यहां पर मैं आपसे बात, एक मिनट ना फ्रेंड्स, वेट. अब्दुल्ला दूसरी साइड्स किधर है बताओ. वो ऊपर हेडिंग में सर. हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट. दिस वन. Yes, this is the another slide, another this PPT. Yes, the best part of science is knowing for a moment something that nobody else in the world knows. That is all about the research. Or in a nutshell, you can say that researching once again from different perspective, from different angle. एक ही चीज है, किसी और ने उसको कुछ और नजरिए से देखा है, आप किसी और नजर से देखेंगे. Now review of literature, that is the, you can say that in basically जो PhD का आपका थीसिस रहता है उसके अंदर एक सेपरेट चैप्टर होता है, that is known as review of literature. बल्कि ये हर किसी के अंदर होता है. आपका छोटा सा प्रोजेक्ट रहेगा उसके अंदर भी आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहेगा. The review of literature is a summary of all the reviews from various research literature related to the current study carried out by the researcher. It helps to discover what is already known about the research problem and what more has to be done. आप ये समझिए ये आपकी जान है. I do remember, I'll share many of my cases. When I've started my PhD journey, one of my mentor, his name is Dr. Shaikh Nisar, a very well-known person in the research world. उन सर ने मुझे जो काम पे लगाया ना, वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे काम पे लगाया. यू शुड बी अवेयर अबाउट योर टॉपिक इटसेल्फ. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिसर्च गैप. ये आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ने के बाद ही आपको जो है रिसर्च गैप समझ में आएगा. रिसर्च गैप आपकी पूरी जान है, वेदर इट इज योर प्रोजेक्ट, वेदर एमकॉम प्रोजेक्ट और एमफिल और माइनर और मेजर और पीएचडी थीसिस का जो रिसर्च गैप होता है, ये आपकी पूरी जान होती है. उसी के ऊपर पूरा आपका यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर जितने भी आप पढ़ेंगे. अच्छा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ने के लिए यू रिक्वायर डिफरेंट पेपर्स. यहां पर प्लीज रेडी विथ योर पेन एंड पेपर. यहां पर वेदर इट इज योर स्मॉल रिसर्च और योर मेजर रिसर्च, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, योर गूगल अलर्ट एंड ईमेल, जीमेल अलर्ट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीवन. Yes, sir. हाँ, गूगल अलर्ट, और आप जीमेल में जाएंगे तो वहां पर आपको साइट के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर आपको मिलेगा जीमेल अलर्ट. ऑन द सेम वे गूगल अलर्ट के अंदर, गूगल स्कॉलर अलर्ट के अंदर, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर सिंपली आपको जो है ना, आपका जीमेल के अंदर आपको अलर्ट डालना है. इन अ नटशेल आपको अपना टॉपिक का नाम डालना है. व्हाट फ्रेंड्स, यू नीड टू पुट अप योर टॉपिक नेम. जैसे फॉर एग्जांपल शेयर यू समथिंग. दिस इज माय जीमेल अकाउंट. Can you see everyone?
Yes, sir. Yeah. See, you can see here Google alert. Is it visible to everyone? Yes, sir. या यहाँ पर आपको दिखेगा गूगल अलर्ट से, और समवेयर आपको देखो ये भी दो दूसरी चीज भी दिख गया आपको, गूगल स्कॉलर अलर्ट दिख रहा है ये सब. फॉर एग्जाम्पल माई रिसर्च टॉपिक वॉज शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स. तो व्हेन आई स्टार्टेड, इट वाज इन 2015 आई स्टार्टेड विद माय टॉपिक. तो वहां पर मैंने दो जगह पर मैंने अलर्ट पुटअप कर दिया था. वन वाज गूगल अलर्ट एंड अनदर वाज गूगल स्कॉलर अलर्ट के अंदर मैंने टॉपिक फीड कर दिया था. अब होगा क्या, यहां पर आपका जो पूरा आपका जो काम है ना वो आपका गूगल करेगा. कौन करेगा फ्रेंड्स? गूगल विल डू योर जॉब. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखा फ्रेंड्स, यहां पर एक चीज मैंने ये भी देखा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के टिप्स आपको बताते हैं. अब ये होगा क्या, जो भी आपका, जैसे फॉर एग्जांपल माय टॉपिक वाज दिस शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक. सी, तो शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स के ऊपर जो भी गूगल के ऊपर अपलोड किया जाएगा, वो गूगल क्या करेगा, मुझे जो है ये इसका जीमेल करके दे देगा टॉपिक के नाम के साथ. यू कैन सी हियर एवरीवन, द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर गूगल जीमेल अलर्ट एंड गूगल स्कॉलर अलर्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Yes, sir. दिस इज वन थिंग. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा एक इसके बाद आपको एक चीज और करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको. जो भी आपका टॉपिक है ना, जो भी आपका टॉपिक है, उसको आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत वेरी रेयर ऑफ देम दे आर अवेयर. यहां पर मैं आपको जो अपलिफ्ट करना चाह रहा हूं ना, और जो भी मेरी बात होगी, दैट इज फ्रॉम द हायर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू. स्कोपस आपको मालूम होगा, स्पेशली दोस्त हु हैव ऑलरेडी डन दियर पीएचडी, उनको मालूम होगा स्कोपस किसको बोलते हैं. ठीक, तो जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है ना, ये दूसरी स्लाइड्स में आपको बता रहा हूं. या दिखा आपको ये चीज, इसको जॉट डाउन कर लीजिए फ्रेंड प्लीज. ये जो आपको दिख रहा है ना, सीमैगो जर्नल एंड कंट्री रैंक. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. या तो इसका Yes, स्क्रीनशॉट sir. निकाल लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए. शिमेगो जर्नल एंड कंट्री रैंक, ये एक स्लाइड है. मैं अब ऑलरेडी जो ओपन किया हूं स्लाइड में, वहां जा रहा हूं मैं. यस, यहां पर आ गया स्लाइड. दिस इज द पेज. यहां पर आपको देखो, ये जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर मैं आपको बता रहा हूं, पहले आपको ये बैकग्राउंड ये आपको समझा रहा हूं मैं. यहां पर जो भी आपका टॉपिक है ना, वो टॉपिक और जर्नल आपको डालना है, या फिर टॉपिक आप डाल दीजिए. तो यहां पर ये टॉपिक से रिलेटेड ये जर्नल्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आर देयर इन ह्यूमैनिटीज और स्पेशली इन सोशल साइंस रिसर्च इंटरनेशनल. मैम सबको समझ में आ रहा है? प्लीज एनी प्रॉब्लम इज देयर तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई Okay, विल okay. इन माय, हाँ आई विल इन माय ओन वर्ल्ड एंड यू पीपल इन योर ओन वर्ल्ड. Okay, okay. When they will put up the question, I will inform you, sir. Yeah, yeah. So it is somewhat little bit technical, friends. Try to understand. तो जो भी आपका टॉपिक है, वो टॉपिक आप यहां पर डालेंगे. जैसे यहां पर दिख रहा है आपको, मैं कर्सर, कैन यू सी, एंटर जर्नल टाइटल, आईएसएस नंबर और पब्लिशर नेम, यहां पर आपको डालना है. ये क्या है ना, ये आपको बताएगा. देखो, आपको कोई भी चीज नहीं पढ़ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इवन तो इट इज योर टॉपिक, कोई भी चीज नहीं पढ़ना आपको. आपको दो ही लेवल पे पढ़ना है. ये जर्नल है, और ये जर्नल का रैंकिंग आपको बता रहा है. इट इज सी, यस, ये आपको दिख रहा है इधर पे कलर के अंदर Q2, Q2, यानी अगर Q1 या Q2 लेवल का है, यानी यू कैन से दैट इन नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर IIT या IIM लेवल का ये टॉपिक है, आपका जर्नल है. जो स्कोपस लेवल जर्नल होता है, उसके अंदर ही बहुत सारे लेवल्स हैं. आपके जो लेवल का जो स्टैंडर्ड का पेपर है, उसको एकदम टेक्निकल आपका पेपर है, या इतना भी हाई लेवल का आपका जो पेपर है, नोवल, वही पेपर आपका सिलेक्ट किया जाएगा जर्नल्स के अंदर, जिसके अंदर समवेयर नोवेलिटी इज देयर, सम यूएसपी इज देयर, सम यूनिकनेस इज देयर. वही पेपर आपका स्कोपस लेवल के अंदर सिलेक्ट किया जाता है. सिलेक्ट करना तो आगे की चीज है, लेकिन आपको अपना माइंड उस तरह डेवलप करना है. उस तरह डेवलप करने के लिए आपको इस तरह की चीजें पढ़ना है. कोई भी चीज, कोई भी पेपर कहीं से भी आपको नहीं पढ़ना है.
आपको वही चीजें पढ़ना है जो Q1 और Q2 लेवल का है। जैसे यहां आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, Q2 दिख रहा है, इंटरनेशनल, यानी ये जो जर्नल है, ये जर्नल का स्टैंडर्ड Q2 है। कुछ जर्नल का लेवल होता है Q1, Q1, Q2, Q3, Q4। तो इन अ नटशेल जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि सर अगर आपको पढ़ना है, द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, वो आपको Q1 या Q2 लेवल के पेपर ही देखना है। यानी अगर Q3 लेवल, Q4 लेवल का है तो उसको आपको आउटराइट इग्नोर करना है। ये इसलिए, एक आपने सुना होगा कि जो चीज आप देखते हो वही चीज आप सोचते हो, वही चीज आपका माइंड फिर डेवलप करता है। वही आपका माइंड फिर जो है ना, आपका माइंड विल कम अप विद डिफरेंट आइडियाज। So in a nutshell, you have to go through either Q1 level or Q2 level. Is it okay, friends? जैसे ये जर्नल जो है ना, ये जर्नल का जो रैंकिंग है, यहाँ आपको दिख रहा है होम, जर्नल रैंकिंग, कंट्रीज रैंकिंग एंड अदर्स। तो ये जो जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इस्लामिक एंड मिडिल ईस्टर्न, ये दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी एरिया, वेदर इट इज फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड और फ्रॉम अनदर बैकग्राउंड। ये जर्नल का रैंकिंग इज Q2 level. Q2 level. This is the most important thing of my presentation. Okay, now I'll move on to this one, the review of literature. तो review of literature it means that जो भी आपके पेपर के ऊपर काम हुआ है, आपके पेपर के ऊपर, यानी आपके जो भी आपने टॉपिक लिया, जैसे फॉर एग्जांपल the research topic was evaluating the performance and prospects of Indian stock market with special reference to Sharia compliant stock. This was my PhD research title. अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर मैं वही चीज पढ़ूंगा जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड हो चुका है काम। तो अब साहब मुझे क्या करना है, मुझे वो काम करना है जो मेरे टॉपिक के अंदर नहीं हुआ था। उसी को कहते हैं रिसर्च गैप। आई विल कम टू दिस स्लाइड, अनदर स्लाइड। यस, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड वेट, research gap. Yes, this I have taken from my own PhD thesis. This is what, देखो ये initial part, there are minimal studies done on topics related to Sharia stocks. As this topic is very new to the Indian stock market, very few dimensions of the Sharia stocks have already been studied. For example, जो भी इस पे काम हुआ है। अब ये last part, this is the important part, last part. But there was a gap in assessing the performance of domestic stocks on the parameters selected by the present researcher, any me. The researcher could not find studies on the parameters such as sales, profitability ratio, net worth, CAGR for market capitalization. I'll make you understand from another perspective. जैसे for example, आपका iPhone है, I think so अभी iPhone 15 या 16 चल रहा है, Pro Max if I'm not wrong, it is going on. Yes. Now, जो भी नया फोन आएगा, वेदर इट इज आईफोन, वेदर इट इज वीवो, ओप्पो, एनी फोन, जो भी नया फोन आता है वो पुराने से डिफरेंट होता है। दैट इज द रीजन। अदरवाइज अगर वो कंपनी ने नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया लेकिन समथिंग यूनिकनेस वो बता नहीं सके, उसी को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं मी टू कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मी टू का मतलब ये होता है कि साहब जो पहला प्रोडक्ट था और नया प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाई शुड आई बाय द न्यू प्रोडक्ट, व्हाई शुड आई गो फॉर अ न्यू आईफोन और एनी अदर फोन। सो दैट इज द रीजन, जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है इन एनी सेगमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो ये कंपनी ये सोचती है ये प्रोडक्ट के अंदर सम यूएसपी हैज टू बी देयर, जिसको आप बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हैज टू बी देयर इन द न्यू प्रोडक्ट। अब यही चीज मैं आपको ट्विस्ट करके लेके आता हूं अपने रिसर्च वर्ल्ड के ऊपर। यही यूएसपी को आप रिसर्च के अंदर बोलते हैं रिसर्च गैप। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने यहां पर पढ़ के बताया आपको, बट देयर वाज अ गैप इन असेसिंग द परफॉर्मेंस। ये जो 4 लाइन है, 1 2 3 4 लाइन, दिस इज द सोल ऑफ माय रिसर्च, पीएचडी रिसर्च। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। इज इट ओके? Yes, sir. Yeah, this is a research gap. Because the point is, जो भी हमारे रिसर्चर्स रहेंगे, जो भी हमारे एग्जामिनर रहेंगे, वो यही सवाल पूछेंगे कि भाई साहब ठीक है आपने ये काम किया वेरी गुड, लेकिन आपने नया काम क्या किया है वो मुझे बताइए। तो ये रिसर्च गैप वो आपका आसान आंसर रहेगा।
इफ यू आर अनेबल टू जस्टिफाई योर आंसर ना, आपकी पूरी मेहनत फ्रेंड्स पानी में जाएगी। ये चीज मैं आपको पीएचडी लेवल से बता रहा हूं, लेकिन ये चीज आपकी हर लेवल पे एप्लीकेबल है, वेदर इट इज योर एमकॉम प्रोजेक्ट और वेदर इट इज योर एमफिल, पीएचडी, माइनर और मेजर प्रोजेक्ट रिसर्च। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, दिस इज द फॉर्मेट, very important format. Wait, yeah. अब ये चीज, this is applicable for everywhere, whether it is your research paper or whether it is your dissertation. Sorry, सबसे पहले आपका आएगा title, then this especially from the research point of view. सबसे पहले आपका आएगा title. Title means your, जैसे for example my title was evaluating the performance and prospects of Indian stock market with special reference to Sharia compliant stock. This is my topic. उसके बाद उसका abstract रहता है. Abstract is nothing but it is the gist of the paper. It is what friends? It is the gist of the paper. Normally जो experts होते हैं ना, expert, they start from backward. They start from, not from the upward trend, it start from the backward. So the first thing is what? Your title of the research. Another thing is your abstract of the research paper. This is the gist in conclusion, then table of the contents, then introduction, then body section. देखो, try to understand. अब यहाँ most important thing जो मैं highlight करना चाह रहा हूँ, that is the body section literature review. Here they have given 30% share in the whole paper. So you can imagine the importance of this research part. तो बॉडी सेक्शन जो भी आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहेगा वो 30% will comprise. Body section will be the what are the methods which we have adopted. जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, और स्पेशली योर काई स्क्वायर टेस्ट है आपका, टी टेस्ट है आपका, और बहुत सारे जो टेस्ट हैं, कौन सा मेथड आपने अप्लाई किया है यहाँ पर बॉडी सेक्शन. देन फॉर एग्जांपल बॉडी सेक्शन विल कंप्राइज ऑफ योर रिजल्ट्स, जो भी आपके फाइंडिंग्स हुआ है. देन वो फाइंडिंग्स के बाद आपका बॉडी सेक्शन विल बी देयर डिस्कशन एंड द कंक्लूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड द लास्ट पार्ट इज द रेफरेंसेस, जिसको आप बोलते हैं रेफरेंसेस भी बोलते हैं आपको. और अगर आप पीएचडी थीसिस करते हैं तो उसी को आप बोलते हैं बिब्लियोग्राफी इज देयर. दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन फ्रेंड्स? ओके, should I move to the another slide? Yes, am I audible? Hello? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you, sir, ma'am, for your response. Go ahead. Yeah. This is the detailed explanation of the above slide. Yes, this was the above slide, and this is the detailed explanation. This is the abstract. अब abstracts के अंदर क्या आएगा आपका? Abstract is the soul of your research part. यानी a person without going through your whole research paper, पूरा रिसर्च पेपर पढ़ने के न जाने से बेहतर यह है कि अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है आधा पेज का या जो भी आपका 15-20 लाइन का रहेगा आपको, वॉट एवर इज द सिचुएशन, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद ही और शी शुड कम अप विथ योर द होल रिसर्च पेपर. एब्स्ट्रैक्ट्स के अंदर आप क्या डालेंगे? यू विल पुट अप योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आपके प्रॉब्लम देखो, वो आपस में कहूंगा आपको, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इसकी मिसाल बहुत आसान है. इसकी मिसाल ये है कि आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, हमारे जैसे डॉक्टर्स के पास नहीं, यस, हमारे जैसे डॉक्टर के पास नहीं, मेडिकल डॉक्टर के पास, जो आपका इलाज करते हैं, है ना, बॉडी का आपका, जहन का आपका इलाज करते हैं, उन डॉक्टर की बात कर रहे हैं. जैसे इसके ऊपर एक जोक मैं क्रैक करता हूं. वो एक प्लेन के अंदर ऐसा हादसा हुआ, प्लेन के अंदर ऑल ऑफ सडन एक को कार्डियक अरेस्ट या इस तरह का प्रॉब्लम अराइज हुआ. तो बहुत सारे डॉक्टर्स थे, तो उनको पूछा, जैसे हमारे जैसे और सलमा मैम की तरह डॉक्टर्स थे, तो दे हैव रीच्ड टू आस्क टू सलमा मैम और मुख्तार सर, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू से सॉरी बिकॉज वी आर नॉट द मेडिकल रिलेटेड डॉक्टर्स. तो जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो आप डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं? आपको कुछ तकलीफ होती है, तो तकलीफ को दूर करने के लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं. तो जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स आर देयर, रिसर्च आर्टिकल्स आर देयर,
that is solution to some problems. Next is your indication of your methodology. Next is your main findings. ठीक है, आपने फाइंडिंग्स क्या किए हैं, मेथोडोलॉजी के अंदर आपने कौन से टेस्ट अप्लाई किए, काई स्कोर टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है आपका, ठीक है, अनोवा है, ये सारे से टेस्ट है. मेन फाइंडिंग्स, आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या है. जैसे मेरे फॉर एग्जांपल मेरे केस के अंदर द रिसर्च फाइंडिंग वाज, जो भी मैंने पैरामीटर्स लिया था, द पैरामीटर शोज द शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स आर मोर फीजिबल देन नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स. उसके बाद आपका आएगा प्रिंसिपल कंक्लूजन्स. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इंट्रोडक्शंस के अंदर आपका क्या क्या आएगा. यस, इन अ नटशेल इंट्रोडक्शंस के अंदर यू विल डिस्कस अबाउट इन द पास्ट डिकेड much research has focused on established a territory, जिसमें claiming centrality, making topic generalization. Friends, I am very fast because the time period is very limited. 1 hour का time दिया गया. Reviewing items of previous research, जिसको आप research literature बोलते हो. It remains unclear why establishing a niche, very important. Niche means what? That is a USP. Counter claiming, indicating a gap. I hope you are understanding. Claiming a, indicating a gap, question raising, continuing a tradition. Next is what the purpose of this study was: occupying the niche, outlining the purposes why you are undertaking this topic. Next is announcing present research, announcing principal findings, indicating the structure. Or review of another thing, another topic is your, that is the literature review. जैसे ऑलरेडी आई हैव स्पोकन अबाउट द लिटरेचर रिव्यू भी बोलते हैं इसको, या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है इसको. यानी इन अ नटशेल, आपके टॉपिक के ऊपर कितना काम हुआ है अब तक के, उसमें से ही आप रिसर्च गैप फाइंड करते हैं. उसके बाद आपका आएगा मेथोडोलॉजी. द डेटा यूज फॉर दिस स्टडी वेर कलेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन. एंड इसके ऊपर मैम ने बहुत कुछ कहा है, सलमा मैम में, सो आई विल नॉट रिपीट ऑन दिस टॉपिक. देन द रिजल्ट्स पार्ट, discussion and introduction. Discussions के अंदर the findings of this study clearly show that review findings, क्या आपने finding किया, discuss outcomes, take a claim, one explanation for evaluation, that is analyze, offer explanation, reference the literature review, state implication. And this study was limited by conclusion. आपके क्या limitations थे यहाँ पर. जैसे for example, stock market is a very broad aspect. So in a nutshell, I have selected a very niche market in the stock market. For example, that is the Sharia compliant stocks. Recommendations, conclusion, and acknowledgements. Now I'll go to this. Already I have discussed with you. Okay. Next is this one. This also I have discussed with you. Yeah, Google Scholar. सोर्सेस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑलरेडी मैम ने भी इसके ऊपर कुछ कहा है. गूगल स्कॉलर और शोध गंगा. जैसे मेरी जो थीसिस है, ऑलरेडी इट इज बीन अपलोडेड ऑन द शोध गंगा की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उसके ऊपर आपको ये थीसिस हमारी मिल जाएगी. मैम आई होप मैम का भी बहुत पुराना काम किया हुआ है, तो मैम का भी थीसिस आपको शोध गंगा के ऊपर मिलेगा. आपको की पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज जब भी आप अपना काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, जब भी आप अपना काम कर रहे हैं रिसर्च का, मेक अ स्मॉल बुक ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर. जैसे आई थिंक सो 100 पेजेस का बुक है, आप वो ले लीजिए, स्मॉल बुक जैसे अपने बचपन में यूज करते थे वो. उसके अंदर आप क्या करेंगे, एवरी डे मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग वन रिसर्च पेपर और आर्टिकल्स. आई होप यू आर क्लियर टू एवरीवन. Am I clear to everyone, friends? Okay. Make a small book for review of literature. Every day make a habit of reading. एक रोज आना आपको एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ना है. Make sure that you take a print copy of read. हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. I hate, for example, mobile or technology from different perspective, different angles से. No doubt technology is a very good thing, but in some of the other cases technology is very harmful to you. जब भी आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उसको आपको ऑनलाइन या मोबाइल पे या लैपटॉप पे नहीं पढ़ना, ये मेरा व्यू है. उसको आपको थोड़ा खर्चा करना है,
आपको एक प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट लेके ही आपको पढ़ना है। और जितना भी आपका अंडरलाइनिंग स्क्रिबलिंग पार्ट है वो आपको अपने हार्ड कॉपी के अंदर पढ़ना है, उसके अंदर मार्क करना है। उसके बाद जैसे मैंने ऑलरेडी हैव रिटन, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, make sure to collect all the details of references, all the detail of what references। यहां पर आपको जो है, जिस दिन आप आपका जो एक आर्टिकल पढ़ेंगे, ऑन द सेम डेट आपको वही आर्टिकल को आपको लिखना है। जो भी आपने आर्टिकल पढ़ा है और जो आपको समझ में आया वो आपको उसमें लिखना है। अच्छा, क्या लिखना है यहां पर मैं आपको बताता हूं। लिखने से मुराद क्या है फ्रेंड्स जी, आपको ये लिखना है, ये चार चीजें लिखना है आपको। दैट इज, एब्स्ट्रैक्ट लिखना है आपको, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था जो भी आपने रिसर्च पेपर पढ़ा, मेथडोलॉजी क्या अडॉप्ट किया था, मेन फाइंडिंग क्या है, प्रिंसिपल कंक्लूजन्स क्या है, ठीक है। और दूसरा, हु आर द ऑथर्स, कौन है इसके, राइटर्स कौन है, रिसर्च स्कॉलर्स कौन है, कहां पर ये पब्लिश किया गया है, कौन सी जर्नल के अंदर, उसका पेज नंबर क्या है, आपको ये सारी चीजें आपको आना है। तो ये आपका एक आर्टिकल बन जाएगा, आपका एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर बन जाएगा। और ये आपको अपने वर्ड्स में ही लिखना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। इसके वजह से क्या होगा, यू विल बी अवॉइडिंग द प्लेजरिज्म। हमदानी मैम, हेलो, हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग फॉर माई दिस प्रेजेंटेशन? Yes, can anyone can help me out? Hello, am I audible to everyone? Hello. Yes, Okay, sir, you are okay, ठीक। audible. अच्छा, Just a okay, minute, sir. okay, I'm confirming. Yes. yeah. So make sure to collect all the different details of references। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फुट नोट्स में काम आएगा, ये आपको रेफरेंसेस में काम आएगा, ये आपको बिब्लियोग्राफी में काम आएगा फ्रेंड्स। अक्सर होता क्या है, मैं आपको अभी से हाईलाइट कर देता हूं। अक्सर होता ये, वो एक कहावत है, हाथी निकल गया उसकी दुम बची है। पूरा काम होने के बाद वो दुम जो है आपका सरदर्द कर देती है, हाथी की दुम। इट इज ऑल अबाउट व्हाट, एट द एंड इसको आपको, जो भी आपका प्रोजेक्ट है इसको आपको साइमल्टेनियसली लेके चलना है। एक जगह आप रिसर्च का काम करें, दूसरी जगह आपको रेफरेंसेस भी रिकॉर्ड करते रहना है साइड बाय साइड। आप ये बोलेंगे मैं बाद में करूंगा, इट इज नॉट प्रॉपर। साइमल्टेनियसली आपका रिसर्च का काम भी चलता रहेगा, प्लस आपका रेफरेंसेस, सॉरी आपका फुट नोट्स, रेफरेंसेस और आपका बिब्लियोग्राफी पैरेलल चलता रहेगा। यहां पर आपका काम खत्म हुआ, यहां पर आपका रेडी है। नाउ this is my this is a Excuse me, sir. page from, yes sir, Hello. Yeah. Sir, it's around 15 minutes left. 1 5 15 minutes are remaining. Yeah. Okay, thank you sir। सी फ्रेंड, ठीक है, 12 5। सो दिस इज द चैप्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इंट्रोडक्शन रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू। ये मैंने इस तरह किया था पिछले 10 आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स। तो उसके पहले जो भी हमारे टॉपिक्स के अंदर काम हुआ था उसको कहा जाता है लिटरेचर रिव्यू फॉर द पीरियड 2000 to 10, लिटरेचर रिव्यू फ्रॉम 11 से 15 तक, फिर बाद में लिटरेचर रिव्यू फ्रॉम 16 से 20 तक। इसके अलावा ये सब रिसर्च पेपर्स हैं। ये जो आपको दिख रहा है लिटरेचर रिव्यू फ्रॉम थीसिस, ये मैंने थीसिस का भी हेल्प किया था। एक तो कितने जर्नल के अंदर आर्टिकल्स आ चुके हैं फ्रॉम रिलेटेड टू माय टॉपिक, ऑन द सेम वे कितनी थीसिस पे भी काम हो चुका है रिलेटेड टू माय टॉपिक। उसको सबको पढ़ने के बाद आई हैव केम अक्रॉस द रिसर्च गैप। नेक्स्ट, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, ठीक है। This is the literature review for the period. This is the research gap which already I have discussed with you. Yes, this is the another important thing. Whether it is your minor research or whether it is your major research, this will help you a lot. That is what, how to avoid plagiarism. Yes, friends. Wait. How to avoid plagiarism? Yes. Now, today's is the era of
take an example, AI, artificial intelligence. So definitely you can go for this artificial intelligence also. So at this point, how to avoid plagiarism? A simple guide. Is it your idea? Yes. अगर दूसरे का आइडिया आपने लिया है, आर यू मेकिंग कोटेशन? अगर आपने किसी और का आइडिया लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ ये करना है, आपको कोट करना है. क्या? फॉर एग्जाम्पल, द आइडिया आई हैव टेकन फ्रॉम डॉक्टर हमदानी. For example, I have taken the idea from Dr. Arif. From example, I have taken the idea from Dr. Salma. ठीक है? So आप अगर आइडिया भी ले रहे हैं, कोई हार्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट यू हैव टू कोट. द प्लेगरिज्म कहां पर अराइज होता है? जहां पर मैंने आइडिया लिया लेकिन मैंने कोट नहीं किया और मैं ये बता रहा हूं कि ये आइडिया मेरा है, तो वो प्लेगरिज्म में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं प्लेजरिज्म के अंदर आ जाएगा. सो आर यू यूजिंग योर ओन वर्ड्स? If yes, तो plagiarism में नहीं आएगा. If no, it will come under the plagiarism. Is it your idea? Yes. If you are not plagiarism, ठीक है, अगर आपका आइडिया खुद का है तो आप प्लेगरिज्म के अंदर आप नहीं आएंगे. अगर आपका आइडिया खुद का नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप उसको पैराफ्रेजिंग करेंगे. पैराफ्रेजिंग का मतलब ये है कि आप उसको अपने वर्ड्स के अंदर आप उसको लिखेंगे, तो वो पैराफ्रेजिंग के वजह से वो आपका ये प्रॉब्लम में अराइज नहीं होता है. आर यू मेकिंग कोटेशन? अगर 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 आप कोटेशन ले रहे हैं तो यू आर नॉट प्लेगराइज. ठीक है, तो प्लेगरिज्म में नहीं आ रहा है. अगर आपने आइडिया दूसरे का लिया आपने और उसको कोट नहीं किया तो ये प्लेगरिज्म के अंदर आ जाएगा. क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? प्लेगरिज्म के अंदर आ जाएगा आपका. गो कोट इट एट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी. फ्रेंड्स, जितने भी आज के तारीख में थीसिस आते हैं, थीसिस आपको वो एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं प्लेगरिज्म रिपोर्ट. प्लेगरिज्म रिपोर्ट के अंदर आपका परसेंटेज देता है. फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज, आई थिंक सो, इट इज 10%. 10% के अंदर तक रहेगा वो एक्सेप्ट करेगा. 10% के ऊपर रहेगा तो आपको वापस से कहेगा कि आपको वापस से इफ द रिजल्ट इज, इसको आप बोलते हो सिमिलैरिटी इंडेक्स कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इन माय केस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द सिमिलैरिटी इंडेक्स वाज 7% ओनली. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई गॉट अ रिलीफ. अगर अल्लाह ना करे वो मेरा 10% के ऊपर आता, फॉर एग्जांपल 11%, 12%, 15% आता, तो मुझे वापस से चेंजेस करना पड़ता. अगर आपका वो 50%, 40% से ऊपर जाएगा तो यहां तक होगा आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा. फ्रेंड्स, खाली रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, आपकी गाइड के ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाएगा. सो दैट इज द रीजन. ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इट विल हेल्प इन योर जर्नी. अच्छा, द आयरन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोलते हैं ना, हम इसको उर्दू में बोलते हैं, अलमिया ये है कि ये जो आपका सिमिलरिटी इंडेक्स या प्लेगरिज्म रिपोर्ट है, ये आपका पूरा काम खत्म करने के बाद आपका ये सॉफ्टवेयर में जाता है. जैसे एक फॉर एग्जांपल टर्निटी है एक सॉफ्टवेयर, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं. वो सॉफ्टवेयर आपका पूरा रन करता है, पूरा थीसिस, और थीसिस रन करने के बाद वो आपको जेनरेट करता है. यानी आपका पूरा काम खत्म होने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा आपका सिमिलरिटी इंडेक्स क्या है. तो ये जो पॉइंट है, दैट इज द हाउ टू अवॉइड द प्लेगरिज्म. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन दिस माइंड, इन योर माइंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है इन टूडेज वर्ल्ड. ठीक है, ये आप इन द एरा ऑफ दिस, क्या नाम है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू कैन गो ऑल्सो फॉर दिस. जैसे फॉर एग्जाम्पल गामा, GAMMA.AI, ये क्या करता है? आपको ये पीपीटी बना के देता है आपको. जस्ट यू पुट अप योर टाइटल. ठीक है, इट विल क्रिएट योर पीपीटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द स्लाइड विच विल हेल्प यू आउट फॉर डेटा कलेक्शंस के लिए. ये सारे एवेन्यूज आर देयर. ठीक है, रेड कैप इज देयर, एक्सएम क्वाल्ट्रिक्स इज देयर, सर्वे मंकी इज देयर. क्लीनिंग के लिए आपका एक्सेल, जो वी ऑल, एक्सेल इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इन डेप्थ पार्ट इज देयर इन एक्सेल. ठीक है, तो ये आपको एक्सेल काम देगा, आपको आर काम देगा. फॉर एग्जांपल इन टुडेज वर्ल्ड आर बहुत यूज हो रहा है. पाइथन विल हेल्प यू आउट. पाइथन लाइब्रेरीज आर यूज्ड बाय डेटा साइंटिस्ट व्हेन इट कम्स टू डेटा क्लीनिंग, prepare and other analysis part. Then data analytics के लिए R, once again R is a programming language and one of the best
tools to help you out in your data analysis process. SPSS, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का हेल्पलेस होता है, स्पेशली फ्रॉम कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, ठीक है. यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यू हैव टू गो फॉर द स्टैटिस्टिशियंस. नॉर्मली द स्टैटिस्टिशियंस दे आर एक्सपर्ट इन SPSS प्रोग्राम. ऑन द सेम वे जेस्प है. फिर विजुअलाइजेशन के अंदर यू कैन गो फॉर टेब्यूला, है ना. आज की तारीख में आपका ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट BI है और टेब्यूला इज देयर. Infograph.am is there, is an online tool for creating infographics, chart, dashboards, and other. On the same way, you are having what? Data wrapper. Data wrapper will also help you out in organizing data in 3 visualization options: web, maps, charts, and other tables. Okay. इसके अलावा something, this is the last part of the slide. Okay. Wait. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जिसे मैंने आपको बताया था, गूगल स्कॉलर, गूगल अलर्ट के बारे में. एक और चीज है विच, एक मिनट, आई थिंक सो, एक मिनट, या ये जो दिख रहा है आपको, कैन यू दिस सी दिस ऑर्सिड, ORCID, कैन यू सी हियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या व्हाट इज ऑर्सिड? जैसे आपका एक आधार कार्ड नंबर होता है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स. वैसे ही आपका एक ऑर्सिड नंबर होता है जो रिसर्चर्स का नंबर होता है. व्हाट माय डियर? जो रिसर्चर्स का नंबर होता है आपका, ठीक है. तो ये आपका रिसर्च जर्नी बताता है कि आपने कितने पेपर पब्लिश किए. आपका H इंडेक्स बताएगा आपका, ठीक है, आपका थीसिस के बारे में, आपका रिसर्च के बारे में, आपके स्कोपस के अंदर कितने आपके पेपर है स्कोपस लेवल के अंदर. तो ये कोई बहुत आसानी से बन सकता है फ्रेंड्स. तो मैं आप जितने भी आज जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं, आई हाईली रिकमेंड, चाहे वो PhD है चाहे नॉन PhD है, इवन तो चाहे वो आपके क्या नाम है, आपके जो MCOM के स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल्सो कैन प्रिपेयर द ऑर्सिड. एक और चीज यहां पर मैं ऐड करूंगा, दैट इज व्हाट, that is this. See, what is this? LinkedIn? Google Scholar. हाँ, गूगल को ये लास्ट में आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, LinkedIn. LinkedIn. Yes, Yeah, sir. LinkedIn. Yeah. How many of them they have their LinkedIn account? क्योंकि आज के एरा के अंदर डायरेक्टली दे विल गो टू द LinkedIn अकाउंट, और जो भी आपका प्रोफाइल है वो सब चेक कर देंगे आपके. उनको आपके डिटेल के लिए जाने के लिए यहां वहां की जरूरत नहीं. जैसे आज की तारीख के अंदर यू कैन अंडरस्टैंड एंड इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इज द जीमेल. ऑन द सेम वे इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज के माध्यम से और आज के प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग हैं, अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट है, वेरी गुड. यस, तो उसको अगर लिंक्डइन अकाउंट नहीं है तो प्लीज प्रिपेयर योर लिंक्डइन अकाउंट. एक ऑन द सेम वे ऑर्सिड, जैसे मैंने आपको कहा, ऑर्सिड इज योर मेंबरशिप. दे विल गिव यू अ सेपरेट आइडेंटिटी नंबर. जैसे आपका आधार कार्ड का एक आप और इंडिविजुअल योर यूनिक आइडेंटिटीज है, ऑन द सेम वे एज अ रिसर्च योर यूनिक आइडेंटिटी इज देयर एज ऑर्सिड. ओके, another thing is, जैसे टॉपिक्स, बहुत सारे रिसर्च टॉपिक्स आर देयर इन सोशल साइंसेस, इन फॉर एग्जांपल फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस है आपका एक टॉपिक. अब इंश्योरेंस तो एक ट्रेडिशनल टॉपिक है, लेकिन इसमें आप एक चीज पे स्टडी कर सकते हैं, क्या पोस्ट इंश्योरेंस, कि भाई जब आपका यानी कुछ जो प्रॉब्लम था वो हो गया, डेथ हो गया, ट्रेजेडी होगी, एक्सीडेंट हो गया, यस, अब उसके बाद, हाँ, वो बोलते हैं ना, लेने के टाइम पे आप जब पॉलिसी लेने आते हैं तो आपके साथ में ऐसे कर देंगे, हेलो मैडम, हाय सर, यस, आपको जो है ना वो रेड कारपेट का ट्रीटमेंट देते हैं. लेकिन जब आप उनसे पॉलिसी एनकैश करने आते हैं तो आपकी तरफ देखते भी नहीं है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनकैश योर पॉलिसी फ्रेंड्स. तो एक टॉपिक बहुत यूनिक टॉपिक है, क्या पोस्ट इंश्योरेंस इफेक्ट्स, व्हाट आर द पोस्ट इंश्योरेंस इफेक्ट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स. हाँ, इतना Yes, sir, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना कि आपका सर का दर्द बन जाएगा, आप बोलेंगे मेरे को चाहिए ही नहीं कुछ भी. तो एक ये भी टॉपिक है, पोस्ट इंश्योरेंस इफेक्ट. एक ये हो गया. दूसरा चीज, फॉर एग्जांपल, आई गिव सम एडिशनल हिंट फॉर द टॉपिक्स. ऑल द ट्रेडिशनल पार्ट, फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं आपके, इंश्योरेंस है आपका, कैपिटल मार्केट्स हैं, ठीक है, आपका म्यूचुअल फंड्स आर देयर,
इसके unique topic are also there. For example, finance is there, economics is there. For example, Islamic finance, Islamic economics, Islamic banking, Islamic stock market. जैसे for example मेरा जो topic था, it comes under the Islamic stock market. For example, insurance is there, traditional insurance there. तो आपका the modern part is what? Islamic insurance, जिसको आप technical language में बोलते हो तकाफुल. Stock market is there, mutual funds are there. ठीक है, तो Islamic mutual funds is there. Take an example of I hope you are aware about the Tata ethical mutual funds. So Yes, sir. Tata ethical mutual funds it is nothing but Islamic mutual funds. I hope you all are aware about the Sensex and Nifty is there. तो इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर आर इस्लामिक 3 indices are there for Islamic the stock market. For example, Sharia 25 Sensex, BSE Sharia 25 index is there, BSE Sharia 50 index is there, BSE Sharia 500 index. निफ्टी के अंदर भी इसी तरह चीज है. So these are the topic which you can use it, which you can explore it for topic. Either it is your MCOM topic, either it is your minor, major. For example, the PhD. I was very astonished to listen from Salma ma'am about the postdoc. Even though the most important thing, I have applied for postdoc also. Many of the researchers, PhD people, they are not PhD doctorate हो गया. In one of the conferences I have joined as a participant, there I have raised the question about the postdoc. But the point is, people are not aware the postdoc. I am very thankful to your organization. Very creatively, बोलते ना वो फूल की तरह और गुलाब की तरह आप लोगों ने चुना है the speakers. Thank you for that. Any questions are there? Thank you, sir. Thank Thank you, you. sir. Sir, at the end of session, there will be a question answer. Okay, ma'am. Okay, no problem. So, ma'am, the full session we have to sit. Yeah. Is it over, sir? Okay, ma'am. Yes. Yeah, ma'am. Is it over yours? Or something नहीं तो else? मेरे पर more time is there or should I? Yes, sir. 10 minutes more. Okay, 10 minutes more are there. Okay. So I was speaking about this Google Scholar, Orsit के बारे में speak किया, LinkedIn के बारे में speak किया. So I was speaking about this the topics, different topics are there and different avenues are there. So friends, you can go for that. जो भी मैंने अच्छा ये Indian markets के अंदर I share my experiences. 2 experiences I share. One at the MBA college I have gone and I presented the paper. I think so, and that paper was selected for this क्या बोलेंगे इसको, not the short Ganga. I am forgetting the let's और आज की तारीख में वो पेपर में आपको अगर ये हाँ पेपर में प्रेजेंट करने के लिए आपको you have to throw 10,000 15,000 rupees. और अभी जो पैरामीटर्स बहुत चेंज हो गया है फ्रेंड्स. अभी जो पैरामीटर्स आ गए हैं नाउ इन द करंट सिनेरियो 2.5-3 साल के अंदर आपको करना होता है. ठीक है. और जैसे आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज डूइंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. सर वाज टेलिंग मी, सर हम लोग के यहाँ पर हमको कोई भी 2 पेपर स्कोपस लेवल के ऊपर चाहिए. अभी धीरे धीरे हमारे ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस के अंदर भी ये चीज आ रही है. यहां पर नॉर्मल पीयर रिव्यू जर्नल के अंदर दे विल नॉट आस्क यूजी. आज के तारीख में दे विल बी आस्किंग फॉर यूजीसी केयरलेस. यस, आई कम कमिंग टू द पॉइंट. 2 ऑफ माय पेपर वाज सिलेक्टेड फॉर यूजीसी केयरलेस. बल्कि इन फैक्ट वन ऑफ माय कलीग, ही जस्ट नाउ इन द प्रीवियस वीक ओनली ही हैज सबमिटेड हिज थीसिस. तो वो थीसिस के अंदर they have said, the Mumbai University के जो थे staff, they have clearly they have indicated, सर आपके थीसिस के अंदर आपने यूजीसी केयरलेस के पेपर लगाया कि नहीं लगाया. अगर लगाया है then only accept, otherwise they are outright they are rejecting. So the point is, friend, the point is, आज previously they used to ask peer review, now they are asking for UGC careless. In the next level, they will be asking whether you are having the UGC careless,
स्कोपस लेवल और नॉट. तो मेरा जो भी प्रेजेंटेशन था, द ओवरऑल प्रेजेंटेशन वाज in order to uplift and in order to make your mind make your mind develop, so that you can come up with those research paper which will help you out for publishing at the Scopus level journal. देखो friends, to be very practical and very transparent, पीयर रिव्यू जर्नल के अंदर आना कोई बड़ी बात नहीं, आंख बंद करके आपका चले आता है. इनफैक्ट आज की तारीख के अंदर, वो सॉरी टू से फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, बोलते ना पैसा फेंको तमाशा देखो, आज वही हो रहा है. But when it comes to Scopus level journal, they are very particular about that. If especially when your article is selected at Q1 level or Q2 level journal, वहां पर they will not take care about your money, but because their name is also at stake. Try to understand, friends. So at that level, they will check out what is the USP in your paper, what is your uniqueness in your paper, what is the novelty is there in your paper. So novelty create करने के लिए मैंने पूरा बैकग्राउंड बनाया आपको, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कहां से आपको पढ़ना है, कौन से आपको सिलेक्ट करना है. आई होप इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. 5 minutes has remained, sir. Okay, ma'am. That fine. Okay, एक minute, please wait. I just just go through and scroll the slide which I've already. And originally, this slide was presented for your platform, but already many part was discussed. That's the reason I'm moving to this one. Okay. I'm just scrolling this one. Idea generations, research interest, literature review, research question, hypothesis formulations. H1 or H0, H1. Next, planning and designing laying the foundation, defining the objectives, choose the, already these points somewhere the others I have discussed with you. Choose the methodology which has been used, design the research study, research proposal, very important thing. रिसर्च प्रपोजल, ये सारी जो कहानी है आपकी, ये सारा जो प्लेटफॉर्म बनाया गया, दिस इज ओनली फॉर रिसर्च प्रपोजल. ये रिसर्च प्रपोजल आप जब आरआरसी कमिटी के पास जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड वेरी पर्टिकुलर एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द रिसर्च प्रपोजल. या फिर आप लो लेवल पे आप बात करेंगे, माइनर लेवल पे बात करेंगे आप, तो ये एमकॉम का जो रहता है आपके कमिटी के पास जाता है, आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स के पास जाता है. Next is ethics and approvals, ensuring responsible research. Ethics approval, for example, if applicable, submit your research proposal to an ethics review board for approval. Then informed consent, ensure that participants understand the research and provide informed consent before participating. Maintain the privacy. Okay, ठीक है. Next is data collection and gathering, already it will discuss. Develop instruments, create or select tools for collecting data, surveys, interviews or experiments. Data collection procedures, establishing a systematic, ठीक है, on the same way data quality control. Then data analysis, uncovering insights, data processing, data analyzing and techniques and interpretation. I highly recommend here to go for example, especially the researchers and the upcoming researchers, try to learn Excel, advanced Excel, Power BI, if possible R. That will help out to create an edge of your research on others. So data processing, data analysis techniques are there, and interpretation results. Yes, this already I have discussed in the different slides. Writing the manuscript and crafting a research story. Yes, this is the last part, submission and peer review, seeking expert feedback. हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, स्पेशली आप जब हाई लेवल के ऊपर आप सबमिट करते हो पेपर, स्पेशली स्कोपस लेवल के ऊपर, तो वहां पर कम से कम आपका, आप ये समझ के चलिए 6 महीने से 1 साल तक ही आपका पब्लिश होने में टाइम जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने जब इसको ये किया है, आपने पब्लिश किया है वहां पर और प्रेजेंट किया है,
तो दे विल गिव यू द क्वेरी. जैसे फॉर एग्जांपल नेक के अंदर हमारी क्वेरी आती है, तो वो क्वेरी को आपको रेक्टिफाई करना पड़ता है. उसी तरह यहां पर भी स्कोपस लेवल जर्नल के लिए बहुत सारी क्वेरीज आती है. तो डोंट इग्नोर दैट. जो भी उन लोगों ने क्वेरी आपको कहा है, रेक्टिफिकेशन करने कहा है, उसको रेक्टिफाई कीजिए एंड दे विल एक्सेप्ट इट. आपको टीडियस जॉब लगेगा बट डोंट इग्नोर इट. Journal selections, choose a relevant journal with a high impact factor and align your research part. On the same way, manuscript formatting, submission and peer review. They will give you the last point is reviewers provide critical feedback and suggestion for improvement. तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको कीजिए जो भी उन लोगों ने कहा है. With this, I am winding up the presentation. Any questions are there? So you are welcome. Thank you, sir. Very informative, Welcome. novel session. Shaikh sir, please proceed for question answer session. Hello. Question answer session. Hi, जी sir. My name is Shamuel Faruqi. I have question. How many literature reviews are required for MCOM project, sir? Hello. Is it question to me, sir? Sir. Yeah. 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 Especially यहाँ बोला जाएगा जर्नल स्टेटमेंट इज स्काई इज द लिमिट. बट देन ऑल्सो जैसे यहाँ पर आप पीएचडी लेवल के लिए 70, 80, 90, बाद लोग 100, 150 तक भी आते हैं. यहाँ देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जितना आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ेगा ना, उतना आपको क्लैरिटी आपके टॉपिक के ऊपर मिलेगा. जी सर. तो अगर जहां पर आपका टॉपिक क्लैरिटी हो गया और जहां पर आपको गैप मिल गया, वो आपका समझ लो दैट इज अ फुल स्टॉप फॉर यू. I hope you got the answer. Right. So yeah, sir. Any? I think so. Sir, I think so. I want Yeah. any specific standard for MCOM project. Yeah. Wait. Yes, sir. Am I audible? जी sir. Right. एमकॉम के लिए कम से कम आप 10-15 तो कीजिए कम से कम फ्रेंड्स. ठीक है. हाँ, मतलब टू बी वेरी क्लियर, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है फ्रेंड्स. हाँ, जहां पर अगर आपका 10 के अंदर सॉल्व हो रहा है, यू कैन गो फॉर 10. जी सर. द पॉइंट इज यू शुड गेट योर आंसर. जी सर. You should get your answer, friend. This is the most important thing. जी सर. Thank you. जहां आपको आपका आंसर मिल गया, then there is a full stop for you. जी सर. रिसर्च गैप, जहां आपको रिसर्च गैप मिल गया, आपको आंसर मिल गया. जी सर. Thank you. Next question. Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम. जी सर. Sir, my name is Ishan Ahmed. I am MCOM student. Yeah. I have a question. Yeah. Can we use AI tools in paraphrasing? Yeah. Why not? So how can we explain? एक चीज और है यहाँ पर. Especially you mean to say how to avoid the plagiarism? Yes. Yeah. हाँ, यहाँ पर जो आप काम करते हो ना, एक चीज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा. जो भी आपका डेटा है ना, यू पुट योर डेटा ऑन गूगल डॉक्स. इसका फायदा ये होगा, एक तो वो प्लेगरिज्म में नहीं आएगा, वो पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 ये रहेगा, आप कहीं से भी दुनिया के कहीं से कोने पे भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने चैप्टराइजेशन या फिर जो भी लेवल से आप पूछ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग एट द हायर लेवल. In my case, for example, I was having 8 to 10 chapters, including introduction to bibliography. So what I have done now, I have prepared 10 this copy for this one. 10 docs. Docs के अंदर मैंने अलग अलग चैप्टराइजेशन बना दिया था. उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, फोल्डर्स बोलते हैं, फोल्डर्स.
चैप्टर नंबर 1 का फोल्डर, चैप्टर नंबर 2 का फोल्डर, चैप्टर नंबर 3 का फोल्डर्स, ये सारे चैप्टर्स आई हैव क्रिएटेड। इसके से क्या होता हो रहा था कि वो सारा काम भी चल रहा था और आपका प्लेगरिज्म के अंदर भी नहीं आएगा। प्लेगरिज्म के अंदर आप ये है, यू हैव टू राइट डाउन फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको इन डिस्कशन आई हैव आस्क्ड यू, एक 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 टॉपिक पढ़ना है, वही दिन पे आपको अपने ओन वर्ड्स के अंदर यू हैव टू राइट डाउन, तो आपका प्लेगरिज्म के अंदर इंशाल्लाह नहीं आएगा। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम। Next question, if anyone is having नहीं, वो ऊपर ना, क्या नाम इसको, any more question, ठीक है। Saket sir. Thank you. Thanks a lot, sir, वेलकम मैम, वेलकम। for your novel presentation. It was very, very informative session. We really enjoyed थैंक यू सो by मच मैम। listening your session. Now we will proceed ahead. That I very humbly invite our last speaker, Dr. Amjad Sheikh sir, to start his presentation. Dr. Amjad Sheikh sir. Yes, thank you, madam. Am I audible? Yes. I'll share the screen. Okay. We have successfully completed two of our speakers. Now our third speaker, Dr. Amjad Sheikh, is about to present on the topic Understanding the Research Process from Idea to Publication. Welcome, sir. Yeah, thank you, madam. My screen is visible to you? Yes. Yes, screen is visible to you, madam? Yeah. Okay. Honorable trustees, principal, coordinator of this webinar, and dear participant, good afternoon to all. At the outset, I'd like to Sir, we cannot hear. hello. Yes, sir. The screen is visible, sir. Yes, sir. Sir, your voice is not clear. We cannot hear you.
Hello. Hello, hello. Yes, sir. Yeah, we can hear you, sir. Yeah, sorry, because of some internet issue. So, Uh, my topic of presentation is how to prepare a quality research paper for a high impact scientific journal. As the previous two speakers have spoken about the quality research, so it's very easy for me to continue forward. Especially Professor Mukhtar has explained very nicely about the how the research paper journal should be and what type of database should be cited. That is the Scopus journal he has emphasized on. Uh, as I outlined, I'm going to discuss about knowing the journal classification, then writing an effective scientific research paper, the journal selection, and develop your skills, and then conclusion. As a journal classifications are important that we should select what are the different types of journals and then ranking. Then international scientific institute involved in classification and ranking. Various ranking institutes are there. Then Scopus journals, as previous speaker has emphasized, that Scopus journals are of high impact factors. And then master list is available for that. Most popular classification is Clarivate Analytics, ISI International Scientific Institute, that is SCI journals. We sometimes we came to know that what are the SCI journals. That is Science Citation Index is there. So if these things are there on the journal website, then SCIE quartile ranking. So there are four types of rankings given to the journal: Q1, Q2, Q3, and Q4. Those are depend on your percentile of the how much that the papers are there and how many papers are cited from that journal. Then we have ESCI journal, that is Expanded Science Citation Index journal, and then Scopus are there. Scopus rankings are there. In SCI or SCIE is one of the ISI classification in which the journals are ranked Q1, Q2, Q3, and Q4 based on impact factor. That is, first Q1 is depend on 25 percentile, then that is Q1. The next 25% is for the Q2 and so on.
So if you see the journals there on the journal database, on the web page of that journal, first page introduction, there you see that the journal is of which type, that is of Q1 type or Q2 type, and depending on that, we can select the journal for our publication. And to obtain the ranking, one may refer to the Web of Science. So if you go to the Web of Science website, there also uh, we can have the this kind of ranking obtained for the journals. Then we have ESCI, are the master list of journal which is available in the Web of Science without impact factors. To obtain the details, one can refer to Clarivate Analytics master list. So this is also one can refer what are the impact factors of the journals and whether the journals are there in the database of Web of Science or Scopus. We can refer to the Clarivate Analytics master list. Now, Scopus, talking about the Scopus, is one of the most popular database which is ranked by SGR and impact factors. Scopus journals are available in all the subject areas. So it is not only previously we think about the Scopus journal in science faculty only, but this is available in all faculty almost. As Sir Mukhtar sir also said that it is there. Scopus database journals are very important one. And nowadays many online journals are in their aims and objective. When you search for the aims and objective of the journals, and then there we can see that we have this database, whether it is cited, whether where the journals is are from the which database. So these all informations are available over there. So ESCI journals, Clarivate analysis, how to search this thing. So this is the website for ESCI journal, Clarivate Analytics. There you can put search master journal list. Here you can put the title word for your journal name, and then when you search for this, you will get to know that where the journal is there in the ESCI database or not. And one can see that here we have arts and humanities citation indexes there, science citation indexes there, social science citation indexes there. So this is available in all faculties. General list for searchable database are there. Web of Science core collections, as we have discussed, that subject indexes on the Web of Science platforms are there. Current contents connect with this we have, and then journal evaluation list also available. Then scope notes are also there in this website. Now, Scopus index journals, we suppose we uh, have to search whether the journals are there in Scopus index or not. This is also there if you go on the website of the Scopus, and there you can put some keywords of the journals. If you have ISBN number or ISSN number, there also you can, from that also you can search that the journal is available or journal is there in the database of Scopus or not. So Scopus Index, this is a website for that, www.scopus.com. So here you can search for the Scopus Index journals. What we have discussed, so you'll get this type of page on that. That suppose this communications of the Korean Mathematical Society is there. So here we have different options for that. Counts for, and then we get the site score for that journal here. This is all data we get for this particular type of journal. Then highest percentile 26%. This is then citations from 2016 to 19. Suppose they have given total number of citation for that journal, and documents with number of papers are there in this journal, and percentage of citation. So this type of all data will get for that particular journal when you search that in a Scopus website. The Scopus journal selection for quartile ranking is also there, means whether we can check the journals are there in the ranking or not. So you need to hit this page, shimagogr.com, and then generalrank.php. There you get the journal, as you can see here, all subject areas. So you need to select uh, which subject areas you belongs to, all subject categories, all regions, countries, all type. This, if you fill all the entries, okay, Shimago general country rank, and then you will get this type of database when you have that journal. What is the journal name?
Cancer Journal for Science. So this journal name is there, and then the journal belongs to the Q1 category. Nature Reviews Genetic. This Hello. yes. Sir, we cannot see your presentation, sir. Sorry. Only your face is visible. The presentation is not visible, sir. Now. So you are presenting something? Yes, yes. The presentation is not visible. That's the reason. Oh, sorry. Means you should have taken. Yeah, yeah. 1 minute. 1 minute. I'll just share. Yeah, sir. Now it is visible. Sorry. So I'll just go back to this. Yeah. From the initial part, just go through. Yeah, I was talk now. Now you can see. Yeah. Is it Yeah. visible, sir? So sorry. So see, this is a Scopus Index Journal website. What I have already explained to you. That is the www.scopus.com. So here you can search the journal whether it belongs to the Scopus database or not by putting all the entries over here. And then suppose this is the name of the journal, Communication of the Korean Sir, can Mathematics. you make it for full screen? Full screen. Full screen. Then Is it will there? be better part. Is it? No, Already I no, have made no. it full screen Acha, okay. from my side. Should I continue? Yeah. Any technical person is there to help it out, man? Because I think so. It is showing the 50% only on the same. 50% your face and 50% on the screen. So, yeah. Or otherwise, you should see like this. it's a blur. It's showing blur only. Any technical person is there, they will help you out. No, the screen is not visible. That presentation is not visible, sir. I think so, ma'am. Some internet issues are there from the source end there. Sir, you are not audible, sir. Hello. Yes, sir, audible. Yes. Yeah, some technical issues are there from my side. Now you can see. Yes, sir, you start. Yeah.
Hmm. Okay, so searching a journal from from Scopus database, that is communication of the Korean Mathematical Society, which is having a highest percentile 26%. Citations are 2016 to 19 are given. So every information is given on this page if you search the journal. Similarly, this is the Scopus journal selection for quartile ranking. As we have discussed, that we can see that whether the journal belongs to the Q1, Q2. So for this, we have this Shimago gr.com journal rank. So there, if you fill all these entries, subject areas, subject categories, all regions, types and all, so you will get to know that what type of journal is, whether it is having a Q1, Q2 is H index, total documents, and also all the data will be seen to us about that particular journal. Now, the second point is writing an effective scientific research paper. Then, why research is important? So, because it is a tool for building knowledge and facilitating learning. Then, means to understand various issues and increase public awareness. Research help people nurture their potential and achieve goals through various opportunities. A seed to love reading, writing, analyzing, and sharing valuable information, and nourishment and exercise for the mind. Now, preparing your manuscript for publication, if you already have a journal in mind that you wish to publish in, at this stage, you can already check the journal's guide for authors to make sure for your manuscript is structured correctly. While writing your manuscript, you should have an understanding of the general structure of the research article. That includes title, abstract, keywords, introduction, methods, results and discussion, conclusion, acknowledgement, references, supporting material. So these are your key titles in your research paper. Then scientific keyword that are used as a labels for the manuscript and for the indexation. Authors should be ordered in the correct way, means first author, second, third, and then corresponding author. That way you should mention the author. Then a short title that will grab the research attention. Your title should be a short, that should not be a very lengthy title. An interesting, understandable, and specific abstract. Authors tend to write the abstract last so that they can ensure they capture all essential information. The clear abstract will strongly influence whether your work is considered or not. So, how to organize research paper in good form? A comprehensive title that we have already discussed, an informative block of abstract, rich introduction by citing all related research paper based on the relevance of the topic. So your introduction should be, you should cite all the research related and relevance, relevance that is Could related. make 15 minutes more, sir. Yeah, 15 minutes. Yeah. Okay, and then main result and conclusion and Sir, change the slide, sir. The slide is the same only, the previous only. I think so. You are speaking for another slide, and it is showing the previous only. no, which slide you can see that how to organize the research paper in good form? No. It is the previous. That is the 26%. Yeah. Okay. This one, is it fine? Yeah. Yes, it's So, fine, sir. yeah. So, abstract writing. In abstract writing, abstract is like a movie trailer. Researcher will only consider reading the rest of the manuscript if they find your abstract interesting. Abstract offers a preview, highlights key points, and helps the audience decide whether to view the entire work. Abstract are the period of research paper because many journal editorial boards screen manuscript only on the basis of the abstract. Then if your abstract doesn't grab their attention and not make a good first impression, there is a good chance your research paper will be rejected at the outset. Moreover, even after your research paper is published, your abstract will be the first and possibly only things readers will access through electronic searches. So they will only consider reading the rest of the manuscript if they find your abstract interesting. Write the abstract after you have finished writing your whole paper, and then pick out the key statements from your introduction
methods, result, and discussion section to frame your abstract with a logical flow. Edit your abstract carefully, make it cohesive, and meet the word count requirements of the journal. Identify the major results from your results section. Then arrange the sentences and phrases into a single paragraph in the following sequence: introduction, methods, results, and conclusion. यहाँ मत थोड़ी देर रह गई है. And make sure that this paragraph does not contain new information that is not present in the paper. So what to avoid there is undefined abbreviations or group names, a discussion of previous literature or reference citations, unnecessary details of the methods used. This thing you have to avoid. Then link your sentences to ensure that the information flows well, preferably in the following order: purpose, basic study design, methodology, and techniques used, major findings, summary of your interpretation that you need to mention, and then conclusion and implications. Now confirm that there is a consistency between the information presented in the abstract and in the paper. Ask the colleagues to review your abstract and check if the purpose, aim, methods, and conclusions of the study are clearly stated. So you can share with the colleagues also whether it is written correctly, and check to see if the final abstract meets the guidelines of the target journal. That is word limit type, because some of the journals have word limit type of abstract they want in a specific type, recommended subheading, etc. That also you need to check. Now revisit your abstract with these steps in mind, and I'm sure that you'll be able to revise it and make it more attractive. Another thing you can do is to go back to the some of the most interesting papers you have read during your literature review. So sample of good abstract, one can see this is a paper which is published in elsewhere, this publication, and applied energy. This is a journal name. A maximum PowerPoint tracking. This is a title of the this research paper, and you can see that the abstract is written in this form, where this work, the objective is written. The work proposes a maximum PowerPoint tracking for PV system using Kaku search method. So this objective is written, then which method is used, that is mentioned clearly. You do not have to write this objective method separately, that what you are writing. You can write this is in one or two paragraph. That's fine, but you do not have to give the title that this is the result, this is the conclusion, this is practical implications. Nothing. You just mention over there. But you should have this type of particular, that is objective should be there in your abstract, method should be there, result should be there, and conclusion is there. So this point should be covered in your abstract. The abstract should contain objective, method, result, conclusion, and practical implication as suggested above. But it will be better to write abstract in a single block and avoid small titles as shown in the this abstract. That's what I have explained. Then we have the main body of the paper. In the main body of the paper, it should must contain recent developments of the subject and cite all the relevant papers. Mention that the structure of the paper at the end of the introduction section. Then you write main result, explain all the result as much as in details and easy follow. Analysis, this part is the most attractive part of the research paper. Give as much figures and table for visual impact. As a science faculty, we can enrich this analysis part by giving figures, table that will give that is more impact for your research paper. So that is there in the analysis part. You can have the discussion also there. You can include discussion part. You can include numerical simulation part over there. So this is there in your analysis part. And then finally you write your conclusion, that must be the summary of the above finding. And then reference section. So reference section, all information must be correct and accurate. The reference part is depend upon the journal which style of references they want. So this is about the main body of the paper. And then we have journal selection and submission. So behind the scene, learn how the articles get published. You have now finished your manuscript. It's time to get published. During this period, we recommend investing the time to understand how an article get published. The backend involving editor, journal manager, publisher, every essential step to get your article published. Then using AI to match your abstract to a journal. Someone has asked about whether we can use the AI. Yes, you can use the AI also, and you can use the AI for searching your journal, means your what is the research paper you have written, and whether that research paper is suitable to which journal. That also you can
search by using the journal finder tool and using the right metrics to evaluate the journal. Then aims and scope, you just search for the aims and scope of the journal, that is read the aims and scope of the journal clearly before submission and structure your paper based on the aims and scopes of the journal. Then subject classification are there. You need to mention the subject classification as far as the science faculty is concerned. You need to write the keywords or classification keyword must be from MSc 2010. So if you see this, if you search this on website MSc 2010, so that will give the subject classification for the science subject. You can search over there. A number of categories are there for your subject, and then accordingly it will give you some numbers over there. So that is there according to this MSc 2010 database. You can write this subject classification. Then check the availability of that editorial member from the subject area. Many journals are asking to choose the editor or chief editor, assign the paper based on the keywords. So we must check the editorial members related to the work. If no subject expert available in the editorial board, then it is not advisable to submit to that journal. And then finally you suggest reviewers names. Some of the journals ask you to suggest some reviewers name, so many of the journals are giving the opportunity to suggest the reviewer, and some of the journals they have their own reviewer database, so they send it to their own reviewer, and some journals are ask you for your own to suggest some reviewer. So if you suggest subject expert as a reviewer, then their comments will definitely help to improve the paper in good form. And then finally how to develop your skills. So note that your paper is a bride, so make up accordingly. Finally also you need to do some of the changes after, once your paper get completed for the submission, but still you need to finish it in a very well manner, and everything must be perfect at the time of first submission. So many good papers are get rejected due to the bad structure and poor English language. So that also you take care of, that your paper should have all the means grammars and all punctuations are written. This is well written, and structure should be good. Paper must be well structured and error free. So that you need to keep it with you for 15 days after completing your paper. Should have that, you keep it with you, and then again and again you read it. If you know some of the corrections are there, some sentences, a word needs to be revised, so that you do, and then after that you finally send it to the journal. The authors are suggested to read the aims and scope of the journal before submission. The structure your paper based on the journal demand. The paper must arrange in simple way so that the readers can follow the result easily. And if you wish to increase the citation, then you go with the open access journal, which is openly accessible to all over the journals. So this is open access journals are there, and some paid journals are also there. If you need to what this means, that citations, so you go for the open access journals. Then you can, as a suggestions, you can go for how to publish a scientific manuscript in a high impact journal. You can see this review article in a Science Direct journal, so you can go for this paper later on. Okay. So with this I conclude my presentation. Thank you so much. Any questions? Thank you. Any questions? Ma'am, one few questions are there. Yeah. Sir, the last slide which you have shown, na, that is slide number 37. So that is in relation to your background. That is, I think so, from the science background. So we can also take the advantage of that, because the science part is totally different world. Correct. From social sciences point of view, which article, or it will help us also? This definitely, sir. This article will definitely help you, whatever the stream you have. But this is though it is published in a scientific manuscript for the related to the science faculty, but some of the information definitely related to this humanities also, and in commerce background also. You just see this journal, this paper. So this is very useful paper for that. And Okay, thank that's you so much. just now sir said that means there is
Scopus part is everywhere. In the humanities also there, in commerce faculty is also there. So everywhere now it is uniform. So many things are common, except some of the few analytical things are there. Some lab work is there in science faculty. Otherwise, rest of the things are very similar in all the faculties. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Sir, thank you very much. It was Yeah, really a very informative yeah, session. yeah. Thank you. Now, Thank you. I invite our ARC coordinator, Professor Imran Ahmed, to present vote of thanks. ARC coordinator, Professor Imran Ahmed. Am I audible? Yes, Sama, I don't know. yes, sir, start. Thank you, ma'am. Thank you very much. Good afternoon, everyone. It is my honor to propose the vote of thanks on this special occasion, the one-day national level webinar on understanding research process from idea to publication, organized by the ARC and the Department of Economics of Mahatma Gandhi Vidya Mandir, Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, in collaboration with IQAC, JT Arts, Science and Commerce College for Women. First of all, we are extremely thankful to our true visionary leaders, Honorable Dr. Samashri Prashant Dada Hire, Honorable Dr. Apurva Bhau Hire, Honorable Dr. Advayaba Hire, Honorable Pushpatai Hire, Honorable Smita Tai Hire, and Honorable Dr. B.S. Jagdale sir, and all our mentors. This webinar is a glimpse of true leadership. We are just following their footsteps. Now, I would like to express my deepest gratitude to our today's respected speakers, Dr. Salma Abdul Sattar, Dr. Muhammad Mukhtar Khan sir, and Dr. Amjad Shaikh sir for sharing their valuable insights and expertise with us. So, your presentations have given us a better understanding of research and journey from an idea to publication. A special thanks to our principal, Dr. Arif Anjum sir, our in-charge principal, Dr. Rizwana Hamdani ma'am, our vice principal, Dr. Shakib Ahmed sir, for their guidance and support in organizing this event. Your leadership has played a big role in making this event successful, and also all the technical teams of the webinar. Finally, a big thank to you all the participants for attending and contributing to this event. Your engagement has made it a success, and we hope that the knowledge shared today will be useful to you in your research work. Once again, I thank you all. Thank you very much. Thank you. Thanks again to all the participants. Imran sir, please share the feedback link in our WhatsApp group of participants now. And after filling the feedback form, participants will get the certificate. Now I declare the webinar is over.